mostly our focus is going to be on JavaScript itself, but we will have a hands-on look at HTML, CSS, but not too extreme. Much time on it. Okay, so it will be just to get an idea कि क्या कैसे connect हो रहा है, how HTML, CSS and JavaScript together are working in the way they should, right? So JavaScript रहेगा अपना, mostly hands-on try करेंगे, totally experimental है. I have not tried doing hands-on type of sessions. This is my first one. This is being recorded. Start करते हैं and let's just see कि क्या flow रख सकते हैं अपन. So JavaScript actually क्या है? So जो इसका नाम है ना, kind of stolen है. जो Java है, right? This part is kind of stolen from Java that we know as a programming language, and वो बहुत ज़्यादा ही robust है, ठीक है? तो why did JavaScript choose to do so? Java नाम क्यों चुराया? Kind of just to get that popularity, right? क्योंकि Java was very popular at that point of time. तो इसने सोचा कि JavaScript करके कुछ रिलीज कर देते हैं. Maybe people will get confused. Maybe they will try to look into it and then they will start liking it, right? Just to gain that attention of the crowd. They maybe came up with this, right? There is no evidence to this, but yeah, kind of that is the idea behind it. So scripting is nothing but when you write some code and it performs some actions. So whenever we are writing JavaScript ना, वो कुछ ना कुछ actions perform करता है, and it is very similar to a programming language, but it has like a good relation with how it works with websites inside of the browser plus how it works on servers. ठीक है, तो वो moving forward we will see कैसा रहेगा. How does JavaScript actually execute inside of the browser? So browser के अंदर है ना, JavaScript को parse करने के लिए, interpret करने के लिए, उसका document create करने के लिए engines रहते हैं. तो Chrome uses a typical engine which is known as V8 engine. ठीक है, so this engine is responsible for taking the JavaScript code and converting it into executable files. जो मतलब कोई भी एक्शन तुम वेबसाइट्स पे करोगे तो उस हिसाब से वो वर्क करे, राइट? सो उसके पीछे ये रहता है V8 engine. Moving forward, JavaScript is also used in various frameworks like React.js. Also server side पे भी बहुत काम आता है. Next.js is also based on this. So kind of इसके applications बहुत है, right? If you learn JavaScript, you can move forward with learning libraries which are based on this. So also I would want to mention कि JavaScript is the most used language at the point. Okay, so yeah, reason वही है कि इसके frameworks बहुत ज़्यादा quantities में present है and people do use them. तो इसके लिए JavaScript बहुत important है if you want to get into development. Let's move forward and अभी लेते हैं basics वगैरह, ठीक है? And I will switch back and forth, बस PPT नहीं रहने वाला है. तो firstly we will understand variables, data types and operators within JavaScript. Okay, तो variables actually होते क्या है? Who don't know variables from a programming point of view, उनके लिए यहाँ पे छोटा सा line add किया है. Names that reference to memory block that stores values for different data type defined within that language. ठीक है, ये general kind of definition है. तो whatever thing you want to store in your code, right, उसके लिए एक वेरिएबल क्रिएट करते हो और उसको एक नेम असाइन करते हो. जैसे कि इफ आई वांट टू स्टोर माय ईमेल एड्रेस, सो आई विल क्रिएट अ ईमेल वेरिएबल एंड उसको असाइन करूंगा माय ईमेल एड्रेस इटसेल्फ. तो वो कहीं ना कहीं मेमोरी ब्लॉक में उसको स्टोर कर रहा होगा, राइट? क्योंकि कंप्यूटर इज अ डिवाइस व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स. उसमें से एक होता है मेमोरी. सो व्हाटएवर you store inside of the memory. So code भी कुछ इसी तरीके से execute होता है. The code first gets stored, then while compilation it comes to the main memory. बहुत सारे shifts होते हैं, transitions होते हैं, and वो तुम conceptually understand करने लगोगे when you go through various subjects, plus when you get an idea of how programming works. Okay, so एक मेमोरी लोकेशन को रेफरेंस कर रहा होता है एक वेरिएबल. मतलब if you have stored a value, something, if you have stored, like I gave an example, I'm storing my email address, so it is going to be stored in the memory block. So उसको find out करने के लिए वेरिएबल डिफाइन करना पड़ता है और उसको मैं नाम क्या दे सकता हूँ? ईमेल दे सकता हूँ. That email will
point to the location of the value that I am going to store. ठीक है, तो काइंड ऑफ एक कंटेनर विजुअलाइज करो मेमोरी के अंदर और उस कंटेनर को एक नेम दे दो काइंड ऑफ कि ईमेल कंटेनर है, इसके अंदर ईमेल वाली वैल्यू है. ठीक है, सो वेन एवर द कोड रन्स, उसको जहां जहां पे भी ईमेल इनकाउंटर होता है उसको कंसोल करना है, उसको प्रिंट करना है, तो वो बार बार वो वहां से फेच कर लेगा ईमेल का वैल्यू क्या है. राइट, सो दैट इज हाउ लाइक वेरिएबल्स वर्क. नाउ व्हाट आर डेटा टाइप्स, यहाँ पे भी एक जनरल सा लाइन दिया है उसका, kind and variety of data that is accepted by a particular language. So every programming languages have its own primitive like data types, right? Different teachers हो सकता है, booleans हो सकता है, ऐसे kinds of things we will like look into it, right? अभी जाता हूँ मैं कोडिंग पे. Operators is also something like that only, जो मतलब ये जब तुमको समझ गया तो ऑपरेटर्स के थ्रू यू कैन परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशंस. तो कैसे होता है, these help you to do all sorts of things like comparison between different variables. मतलब दो वेरिएबल अगर डिफाइन किया आपने and if you want to compare them or maybe see their equality, right? If variable 1 is equal to variable 2, if it is equal then do some action. So such kind of things, ये सारी चीजें मिलके कंपोज करती है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे वर्क करेगा. So let's come to like our VS Code. Hopefully you are familiar with VS Code. It is a code editor, nothing fancy. It is open source, you can install it kind of. I like it is my preference. तुम दूसरे code editors भी ले सकते, no worries. Now what I have here is I will explain. यहाँ पे मैंने कुछ preparations करके रखे. I won't show the scary part right now. तो यहाँ पे index फाइल है, ठीक है. There is nothing, okay, nothing. यहाँ पे देखो एक लाइन है console.log starting the session. So what does this line do? अगर Python में वर्क किया है तो print is a statement that outputs something on the screen, right? So similar to that, console log is something that outputs something to the console. Now what is a console? Console is something that is attached to a document, ऐसा भी बोल सकते हो, or it is provided by a browser or a server. ठीक है, so अगर तुमको console देखना है, so we can come back to here and I can do a very fancy shortcut. It will open up a क्या बोलते हैं इसको, डेवलपर टूल्स वाला थिंग. तो इंस्पेक्ट टूल करते हो ना wherever on your web page, you get this thing. So there is a console, right? This is a console. So whatever I write ना console में अगर मैं log कर रहा हूँ, तो if I run this thing, this should show over here. Now I am not going to do that every time, so I am going to use Node. Like I said, JavaScript is capable of being executed inside of the browser, but Node.js helps us to run the thing outside of the browser as well, as a server thing. ठीक है, तो let's say if I have Node in my क्या बोलते हैं system, I can just run this file. Do note कि मेरा path क्या है. Tutorials folder के अंदर I have a JavaScript tutorial which is actually opened right now. And उसके अंदर जो index.js file है, which is this very file that I have opened up over here. If I execute that, right, it will log everything या फिर it will execute every JavaScript code inside of it. तो visualize करो कि ये console ही है, right? अगर मैं इसको proper HTML के साथ CSS के साथ लिंक करके एक लाइव सर्वर पे दिखाता तो वो console log होके दिख रहा होता. So just for the demonstration purpose, I will take all those things by like logging them into my console over here. ठीक है, so let's enlarge this a little bit, only a little bit. ठीक है, so we are starting with the session now. I think so the instructions are clear. ये mock file है. These are the preparations I have made just to like go through. मतलब everything, मतलब जो भी मैंने आज के लिए prepare करके रखा है ना, वो सब पढ़ने के लिए I have done this, right? So we had a look at basics, right? Basics में क्या पढ़ा अपन ने, variables पढ़ा. तो there are different types of variables. मैंने यहाँ पे ये code लिया. I will come back to index. Okay, I will come back to index. I will remove this line all because it is not needed. Now see, what do we have here? We have a variable declaration. The keyword for that is var. Okay, and x is the name that I am giving to this variable,
and I am using equality sign. Okay, equality sign, assignment operator, and I am assigning a value of 10, which is an integer. Okay, so JavaScript itself is dynamically typed. Okay, so उसको तुमको टाइप नहीं देना पड़ता है. If you were using a TypeScript thing ना, तो आपको यहाँ पे नंबर ऐसा लिखना पड़ता है. Although this will give you an error because we are using JavaScript itself. So what does JavaScript do? It does something similar to Python. अगर Python में work किया है तो Python में you don't have to give it a type, right? You don't have to do this, right? And in JavaScript also it works, right? अगर var में नहीं लिखूंगा ना तो by default it will take the definition as a var, ठीक है? But I have mentioned it implicitly just to demonstrate कि ये keyword का importance क्या है, ठीक है? So इससे readable हो जा रहा है, right? कि मैं एक variable type का x define कर रहा हूँ, उसको 10 allot कर रहा हूँ. Now what I'm doing is I'm running a simple if statement. If you don't know about this, so don't worry, इसका भी एक section है in this particular series and we will cover that. What we are doing is अगर यहाँ पे true है, अगर ये condition true है, तो var y को सेट करना है 20, एक और वेरिएबल लेना है y और उसमें 20 वैल्यू असाइन कर, and we are simply doing the console log. So the outputs are shown over here. If I run the node wala part, if I run the same command again, it should give us the same output it is showing over here. So 10 and 20 रहना चाहिए. Fine. Hopefully it is clear for you guys, right? So var is one type of way to like define variables. So let's come back to our PPT. Let's go ahead. What did we look at? हमने var के बारे में already पढ़ लिया. Now there is one thing. This is not actually recommended for use. Why not? Why it is not recommended? We will see कि क्या reason है var को क्यों use नहीं करना चाहिए. ठीक है? So we'll scrape out this code. We'll go back to this file. We will look at an different type of variable declaration. Okay. So I took another variable. इसको भी मैंने x ही नाम दिया, but इसको मैंने define किसके through किया है? Let keyword use करके. Okay. So what does that do? ये mutable variable बनाता है. मतलब if I give any value to this now, further on I can change it. Right? यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे change कर पा रहा हूँ y को. So let's see. I think so. अगर इसको comment out कर दे अभी के लिए, error हमको नहीं देखना है, right? If I run this code, what should be the output? If true, मतलब ये condition always true है, right? तो ये line execute होने ही वाली है. That is the sense of this entire block. So अगर ये true है, which it is true, तो y एक और की like variable define हो रहा है, and it is doing this, क्या बोलते हैं, 20 उसको assign कर रहा है. तो if I run this, so what we are doing, console log x कर रहे हैं, तो x के अंदर क्या है, 10 है, तो it should print out 10. It is printing out 10. Now what is the difference? What is the difference? If I like uncomment this line, I am trying to log this variable y, and we are supposed to see an error. Okay, we are supposed to see an error. Let's error आया, right? Because it is blocks. Why it is blocks? What is a block? So ये जो curly braces दिख रहे हैं ना, kind of this is what creates a block, and block is something that has its own memory. ठीक है? So inside of this block, I like defined a variable y. I gave it some value, but what I'm trying to do is इस block के बाहर I'm trying to execute, like print out it, right? So इसीलिए it is unable to find that variable y because it was limited to this very block. And if I had used a variable var keyword, तो देखो क्या होता है. We won't get the error now. It prints that out. So you will think कि अरे यार error तो नहीं दे रहा है, तो this should be better, right? Why people do not recommend using var, right? Because यहाँ पे block related scope से ना बहुत सारे conflicts आ जाते. Now if I would want to declare another variable by using let outside, right? I don't know what the behavior will be. मैंने test out नहीं किया, तो कुछ conflicts आएंगे. See, y has already been declared. Although I want to declare this for global scope, और ये मेरा एक
क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं ब्लॉक स्कोप रहना चाहिए। तो वो स्कोप रिलेटेड है कि ये ब्लॉक के अंदर ही इसकी मेमोरी एग्जिस्ट करनी चाहिए थी, बट इट इज बीइंग डिफाइंड एवरी टाइम ग्लोबली, so that is a bummer. I don't want to do that. That's why people go with let keyword. ठीक है, and it is a good convention. So var बस understanding knowledge के लिए याद रखना अच्छा है, but whenever you are creating a mutable variable like mentioned in this PPT, you should always use let keyword. Fine. Moving forward, we will come to const keyword. Const क्या होता है? Constants define करने के लिए यूज होता है. Immutable variables kind of, right? Immutable variables are something which when you assign value to them, and it is mandatory to assign them value when you are defining one, then it cannot change over the time of execution. ठीक है, तो इसके लिए भी अपने पास कोड तो रहेगा, right? Because I have prepared things. So we'll take these two lines and we'll bring all of them to here. Now what we are trying to do is we are creating a variable of type constant and we are giving it a pi value, right? Mathematics किया रहेगा तो you must be knowing about this. Okay. Now what we are trying to do is we are trying to assign a different value. ये फ्लोट टाइप में था, ठीक है। यहाँ पे देखो डेसिमल पॉइंट है, उसके बाद प्रेसिजन नंबर्स है, राइट। यहाँ पे इसको इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, नॉट टू बैड, राइट, बट समथिंग इज नॉट गुड. We have used a const keyword and we are trying to assign a different value in the series of execution. So this is not going to work as it shows over here, right? It is going to, we are expecting an error and we got an error. A reassignment is not possible for constant type of variables, right? So that is why we use const. If you want to use a variable that you do not want to change any moment in the execution, then you can use const variable, right? So इसके भी use cases बहुत होते हैं. So we covered three types of variables. We covered var, we then moved on to let, then const. So hopefully that is clear. इसके बाद क्या था? Data types था. So we'll go move on to data types. What are the different data types that we have in JavaScript? So इसको ऊपर ऊपर से देखते हैं. Everything you don't need to see. We can have numbers in JavaScript. We can have string values. String as combination of characters. Like my name itself, Jamil Sheikh, can be enclosed in quotation marks, and it will be a string, right? So I will give you guys examples, but firstly देख लेते हैं. Boolean type हो सकता है, true or false values. Then we have array, ठीक है. Array होता है iteratable, होता है उसके अंदर like combination a series of value you can store and you can iterate that thing, ठीक है, और उसमें एक्सेस कर सकते हो कि डिफरेंट इंडेक्स पे क्या वैल्यू स्टोर है. वी विल सी कि क्या होता है एक्चुअली. ऑब्जेक्ट्स में क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट्स आर नथिंग बट, इफ यू नो पाइथन, मैं पाइथन का रेफरेंस बहुत ले रहा हूँ क्योंकि यूजुअली पीपल लर्न थ्रू पाइथन ओनली. तो अदरवाइज हैश मैप, इफ यू नो हैश मैप या फिर मैप इटसेल्फ, तो ये की वैल्यू पेयर्स के हिसाब से लाइक things को store करता है. If I create a value, I can give it a first name key and I can assign the value as Jamil. I can give it another key as surname and I can assign the value Sheikh. So inside of an object, I was able to store different things and assign them different keys, and I can access those things using the specific keys that I have defined. Okay? तो action में इसको देखते कैसा रहेगा. Where we will move down to functions. Then we will see कि undefined क्या चीज है and null क्या चीज है, ठीक है. तो पीपीटी में कुछ भी नहीं है. Let's come back to hands on and let's see what we can do, ठीक है. So let's come back. What we will do is take a let variable and इसको variable ही नाम दे देते हैं, ठीक है, because we do not want to change this every time. So 30, I'm doing it. What I'm doing is I've created a variable. I've gave it a value of 30. Now I want to do a console log. Okay. I'm going to do a type of thing. ये कुछ है. You don't need to know कि क्या कर रहा है. You will तुम लोग खुद समझ जाओगे when I actually execute this. ठीक है. So variable मैंने create किया. I gave it a value 30. Then I am trying to console log a value where I am trying to get the type
टाइप इज अ काइंड ऑफ, अगर इसका डेटा है तो इसके अंदर जो डेटा है वो किस टाइप का है. आई एम ट्राइंग टू प्रिंट दैट आउट. सो लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस एंड इट सेज नंबर. Fine. I'll come back to Discord and hopefully everything is working fine. Raghav, give me an acknowledgement if it is. Cool. So what we are going to do, we are going to work with everything else, right? If I do jump, like I gave an example, now the type should be string, right? So it is changing, right? I don't have to do static typing. It is JavaScript is able to figure out what type of data is being stored inside of it. So let's come back to the PPT. Wait a second. Yeah, back to the PPT. Let's see Boolean. Boolean को कैसे कर सकते हैं? So if I store true inside of this, and if I try to log that, so it says Boolean type का data आपने store किया है inside of variable, right? That is the thing. Coming back to the PPT, array बोल रहा है. Now I want to do maybe Jamil and another element, shake, symbol, EK type के quotation marks. And if I run this thing now, so there should say object. Now this is something different. Why it is not saying array? Huh? Why it is not saying array? Because in JavaScript, जो insidious thing है, right? जो background पे हो रहा है. Functions are objects, arrays are objects. Almost everything that you try to use now, those are of type objects. So अगर type of keyword use करके if we try to log this, right? So it is going to say object, but this is actually an array, because we know to define an array we require square brackets. Inside of that we can store a series of values, right? It need not have to be like just strings. We can also do numbers, right? And when we will go to loop statements, तो हम देखेंगे कि इसको iterate कैसे कर सकते हैं, right? We will see. So this was an exception कि it is not picking up that it is an array. It is just saying कि object है. ठीक है. So ये थोड़ा सा insider game है, थोड़ा सा higher level है इसको समझना. And even if I try to explain, I might mess up. So let's just avoid that. ठीक है. Let's come back. Array अपन ने देख लिया definitions कैसा होता है. Object try करते हैं. अरे अगर object array का ही object print कर रहा है तो तुम object करोगे तो definitely object ही आएगा, right? So I can create an object using what? Curly braces. Fine. First name. This is a key. Okay. I'm using a colon symbol and I'm going to give it a value. Okay. First name is Jamal. Surname is Sheikh. Almost. So what I'm trying to do, print the type of that. Okay. So this is working. So we know it is of type object, right? Let's see how it is accessible to us. So if I try to do variable and if I try to print first name, then it will log my first name that is inside of the object, right? So वो is kind of इसको map बोलते हैं कि for a particular key there is going to be a particular value, and whenever you try to access that value using the key, the value will be accessible to you. So ये dot notation है, एक और notation रहता है which I will show right now. ऐसे भी आप वैल्यूज मतलब कीज को वो कर सकते हो, स्पेसिफाई कर सकते हो, राइट? Wait a second, huh? Maybe I have to convert this to string. Okay, fine, perfect. So run हो गया, right? I'm not done. कुछ भी नहीं पड़ा. So if I change this, that should print out shake for now. Perfect. Let's go back. Objects भी थोड़ा बहुत देख लिया, definitions कैसा है, how we can access that. ठीक है. Function क्या है? So function देखते हैं अभी. Function is a piece of code that you write so that it is reusable and accessible to you, right? When you are writing a code and you know कि एक type of action तुम्हें शायद 10 बार भी करना पड़ सके या फिर variable times आपको करना पड़े, तो you want to do the same action, उसके लिए बार बार आप code same repeat करना नहीं चाहोगे, right? तो उसके लिए हम functions define करते हैं.
और वो like in JavaScript itself, you do that using function keyword followed by the name of the function. I'm going to keep it as func. Then you give a parenthesis and you then open a block scope for that function, right? Whatever inside of this is limited to this block. One, अगर तुम let keyword use कर रहे हो, var करोगे तो एकदम everything will mess up. Complications are there. So this is how you define a function. And if I say let y equals to 10, right? Console log y, right? And if I save this thing, what do you think if I execute this? Will it show something on the screen? No, nothing will show because I am not actually calling this function. So I can do func, right? I can save the file. I can try to or run this. Now it is doing the expected thing, right? Now, वही अगर मेरे को 10 बार करना रहता, so क्या करता मैं? इसको 10 बार कॉपी कर देता, right? और इसको वो कर देता, सेव करता, then I would do the same thing, and it does the same operation the many times I call the function. So this is the use case for functions. Or functions in JavaScript are very beautiful. तुम देखोगे अभी थोड़ा बहुत मैं आइडिया दे दूंगा throughout the session. Like functions बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होते हैं, थोड़े डिफरेंसेस है, थोड़े सिमिलैरिटीज हैं, बट जावास्क्रिप्ट ना अपना एक स्पेशल बंडल रखता है फंक्शंस का एंड हाउ दे बिहेव. ठीक है, सो थोड़ा सा उनका बिहेवियर कोकी हो सकता है, मतलब समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, बट इट इज वेरी फैसिनेटिंग टू अंडरस्टैंड. ठीक है, एज अ जावास्क्रिप्ट डेवलपर तुम्हें एक एज मिलेगा अगर तुमको समझ में आने लगे, राइट? एक जावास्क्रिप्ट डेवलपर है जो बिगिनर है, he comes into writing code, he sees your code, he sees damn how it is working out, ना किस टाइप का कोड है. लेकिन तुमने कुछ quirky कोड लिखा है, थोड़ा सा ऐसा कॉम्प्लिकेटेड है टू अंडरस्टैंड, बट इट इज गोइंग टू वर्क आउट, लाइक इट इज गोइंग टू एग्जीक्यूट जस्ट हाउ यू वांट इट, राइट? सो इसीलिए हमको लाइक वो स्पेशल पार्ट भी अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है जावास्क्रिप्ट. So we saw function, then there are two other things. Let's read them. What I will do is let variable undefined. Now undefined is going to, hopefully it is going to show undefined type of variable. Yeah, it is going to show undefined. Undefined is a special case whenever you do not, whenever you do not assign any value, right? वो let keyword const रहता तो देखो अभी error देता कि भाई, see the red line is showing const declaration must be initialized, मतलब उसको आपको वैल्यू देना जरूरी है. But if you are doing let, it is just fine if you don't give it a value. So by default, when the JavaScript reaches the browser or the server side, right, वो जब run down करता है every statement it executes sequentially, right? तो जब उसको ऐसा कोई वेरिएबल मिलता है जिसको कोई वैल्यू असाइन नहीं किया है, तो by default it will store undefined inside of it. So how we can know that? See this. It is going to print undefined. So giving it a implicit undefined value doesn't matter. Remove भी कर दिया तो it is going to store that, right? So ये एक undefined वाला case है. Then we have null. Null is very different than undefined. If I try to do this, say this, it is going to say it is an object. बहुत confusing है, right? Why it is not showing कि ये null है bro? Why it is showing कि object है? Because I said JavaScript कुछ अपने ही वे में कर रहा है चीजें. You can't change it because we are not the owner of JavaScript. But it is very fascinating to see कि मैं array बनाऊंगा, उसका type try करूंगा तो वो array नहीं देगा, वो object देगा. And if you know this thing, you can ask this to someone else और वो confuse होके शायद array ही बोल दे या फिर null ही बोल दे, right? So that is the advantage that you have over someone who is just beginning to learn, right? So coming back to the PPT, we covered most of the data types that are there and that you will typically use when you work with JavaScript. Let's move forward and let's have a look at operators. ये मैंने गलत किया क्या कुछ press? ठीक है. Let's have a look at the operators. वो कहाँ पे है actually? Arithmetic में. So if I take this code
and if I bring this over here, let's see what we are doing in this code. Okay, यहाँ पे x एक वेरिएबल बनाया, let कीवर्ड का यूज कर रहे हैं, x को वैल्यू दिया 10, ठीक है, let कीवर्ड यूज करके एक डिफरेंट वेरिएबल बनाया y और उसको वैल्यू दिया 5. व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज एक नया वेरिएबल बना रहे हैं सम, जहाँ पे उसका सम स्टोर कर रहे हैं, ये दोनों को ऐड करेंगे यूजिंग द एडिशन ऑपरेटर. एरिथमेटिक है, राइट? जो भी मैथ्स के रिलेटेड है उसको एरिथमेटिक ऑपरेटर्स बोलते हैं. And this particularly will be addition operator. This will be the subtraction operator, multiplication operator. This is going to be the division operator, modulus operator. Okay. So what we are doing is adding the two variables. Then we are subtracting the variables. X में से y minus कर रहे हैं, तो 10 में से 5 is going to print out 5. Then product कर रहे हैं. Product is nothing but multiplication, right? X into y 50. 5 into 10 is it is going to be 50, right? क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब डिविजन क्या आएगा, 10 डिवाइडेड बाय 5 क्या आएगा, तो 2 आएगा, राइट? सो दैट इज दैट. अगर इसको लॉक करें तो वहां पे जो कमेंट्स में वही शो होना चाहिए. ओके, आई डिड नॉट सेव द फाइल, सो दैट इज stupid of me. So I'll save it again. I'll try to run it. It did not run. Okay, it did not run because I'm not trying to log those things out. सम करूंगा, डिफरेंस करूंगा, प्रोडक्ट करूंगा, क्वेश्चन करूंगा, देन रिमाइंडर करूंगा. एंड इफ यू कैन सी मैं सारी चीजें टाइप नहीं कर रहा, इन बिटवीन मेरे को सजेशंस आ जाते. दैट इज बिकॉज आई हैव सर्टेन एक्सटेंशंस दैट हेल्प मी टू राइट. नाउ इफ आई हैव सेव्ड द फाइल प्रॉपर्ली एंड इफ आई ट्राई टू रन इट, इट इज गोइंग टू शो ऑल दोस थिंग्स. पहले का आंसर 15 है, 10 है, 20 है, 2 है एंड 0 है, राइट? सो वी आर गेटिंग द एक्सपेक्टेड थिंग. Right. चलो फिर अभी let's move ahead, and to move ahead we have to go back here. दूसरे type of operations देखते हैं. Arithmetic देख लिया. Comparison क्या होता है? Let's go here. Let's scrape out all the code and put this code over there. यहाँ पे एक और type का variable लिख दिया, a and b name दिया उसको 5 and 10. ठीक है, हम console क्या कर रहे हैं, अगर a is definitely equal to b, मतलब यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस है इसके, मैं बता दूंगा, यहीं पे डेमोन्स्ट्रेट कर दूंगा कि अगर a इज इक्वल टू b, मतलब सेम है, तो इट इज गोइंग टू लॉग ट्रू. इफ इट इज नॉट सेम, इट इज गोइंग टू लॉग फॉल्स. ठीक है, तो एज वी कैन सी ये 5 है एंड ये 10 है, तो दे आर नॉट इक्वल, राइट? दे आर डिफरेंट इंटीजर्स, सो इट इज गोइंग टू डू फॉल्स. सिमिलरली व्हाट वी आर डूइंग इज, अगर a स्मॉलर देन b है तो लॉग ट्रू, राइट? So a is smaller than b, right? A has the value 5, b has the value 10. 5 is comparatively lesser than 10, right? That's why it is saying true. तो booleans में हमको result return हो रहा है. Also ये इसके बारे में अंडरस्टैंड करते हैं कि 3 इक्वल टू, मैंने 2 देखा था भाई डिफरेंट लैंग्वेजेस में, ये 3 का क्या सीन है, ये क्या चीज है, तो ये जावास्क्रिप्ट करता है. तो अगर मैं इसको 10 दूंगा, अभी क्या है, दोनों वेरिएबल्स में सेम वैल्यू है, so what we should get is true, right? The expected out should be true. So yeah, we are getting the expected output. Now see the difference. If I define a string type and if I use the same amount of equal to signs, and if I try to save this file and run this again, it is going to show false. क्या बोल रही है? Bro, you are trying to compare two variables, and when I try to compare those variables, तो एक में 10 है, एक integer value, एक में 10 है but एक string value, and these are not equal because those are not of the same data type. That's why it's said false. Now if you say लूज कंपैरिजन करोगे ना, इसका लूज कंपैरिजन, ये स्ट्रिक्ट कंपैरिजन के लिए यूज होता है. लूज कंपैरिजन करोगे मतलब 2 इक्वल टू साइंस के साथ करोगे ना, तो जावास्क्रिप्ट बिहाइंड द सीन्स क्या करेगा, अरे ये तो स्ट्रिंग है लेकिन इसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर 10 ही है, इसको कन्वर्ट कर देता हूँ और मैं यूजर को बोलता हूँ हाँ ब्रो करेक्ट है, ट्रू है, सही है. सी दिस बिहेवियर. So that is the difference between triple equal to signs and double equal to. Hopefully that is understood for now.
तो दो चीजें देख ली अपन ने ऑपरेटर्स में से, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एंड कंपैरिजन ऑपरेटर। फाइन, लॉजिकल ऑपरेटर्स देखते हैं। Coming back here, scripting out the code, putting the new code inside. एक वेरिएबल बनाया is true, उसके अंदर वैल्यू क्या डाला, true डाला। इसका वेरिएबल नेम है is false, इसके अंदर वैल्यू क्या डाला, false डाला। These are boolean values। रिजल्ट क्या है, रिजल्ट एंड ये कंपेयर क्या बोलते हैं, ये कौन से हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो हाउ डज लॉजिकल वर्क्स, ठीक है। तो अगर इज ट्रू ऑल्सो इज फॉल्स इज ट्रू, मतलब दोनों अगर ट्रू होते हैं, मतलब ये भी ट्रू होता, तो ये ट्रू वैल्यू रिटर्न करती। बट वी हैव समथिंग डिफरेंट। तो वी आर कंपेयरिंग टू वेरिएबल्स, इसके अंदर वैल्यू ट्रू है, इसके अंदर वैल्यू फॉल्स है, एंड ट्रू एंड false are false, so we are going to get false if we try to console this। log भी करना पड़ेगा, result, right? But if I store true, even though the name will conflict, is true के अंदर true, sorry, is false के अंदर true you say store कर रहे, you are naming the variable very badly, so it is going to print out true, because now inside of these two variables we have the boolean values of true. True and true are true, so it is going to be it has printed out for us। So let's revert back that change and let's move on। सेकेंड वाला देखते हैं, और ऑपरेशन। दिस सेज कि अगर ईदर ऑफ दोज आर ट्रू तो मैं ट्रू बोलूंगा। तो अगर ईदर दिस इज ट्रू और दिस इज ट्रू, डजंट मैटर, इट विल सी whichever it finds true, वहीं पे वो बोल देगा it is true। Okay, so we know कि is true is a variable that has a value true, so यहाँ पे वो चेक करेगा तो ये बोलेगा एक पहले वाले में इसको मिल गया कि true है, so it will print out true even though the second one is false, right? अभी ये negate करने का सिंबल होता है, we are negating this, so whatever value is stored inside of is true ना, उसको flip कर दो, उल्टा कर दो। तो true stored है तो उसको उल्टा क्या करेंगे अपन, false करेंगे, right? तो it is going to show false result, और इसको not भी बोलते हैं, okay? और इसको negate symbol बोलते हैं। whatever is the thing उसको उल्टा कर दो, flip कर दो, false। perfect, hopefully this is correct। let's go back अपने ऑपरेटर्स स्टडी करने में। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या है, you already saw like saw कि क्या असाइनमेंट होता है, सॉरी गलत गलत स्विच करते हैं। सो इफ आई सेव दिस थिंग, यहाँ पे एक z वेरिएबल लिया, उसके अंदर 5 वैल्यू डाला। अब z को मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ 3 से, तो इक्विवेलेंट क्या है ये, z इक्वल्स टू x जो प्रीवियस वैल्यू है, सॉरी x क्या है, ठीक है। तो अगर z है तो z इक्वल्स टू 5, राइट? तो यहाँ पे 5 लेगा वो और उसमें 3 ऐड कर दे, so we should get the value as 8। simple operation, I think so। Did I not save the file? Yeah, I'm not trying to console that, so log zip। अरे यार स्विच करने की आदत है, सॉरी। See, it is printing out 8। fine, let's scrape this out, let's go back, let's see what else we have। unary operators, what are unary operators? सच्ची में बहुत ज्यादा आदत है। what I'm trying to do, created a variable named as count, उसके अंदर value क्या दिया, 10 दिया। I'm using a unary operator that is represented by two uh, plus symbols or minus symbols, right? And what I'm trying to do is add a value of 1। okay? So it should print 11 for us, it is printing 11। if I do minus, then it should print 9 for us, so let's do this, and it does 9, right? Perfect, flow बराबर है, ternary operator।
Let's create this out. Is ternary is something थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड. यहाँ पे अपन ने एज लिया. ओके, एज के अंदर वैल्यू दिया 20. नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज, इतना पार्ट अभी इग्नोर करो. ये कोई वेरिएबल है, उसके अंदर इसका जो भी प्रोसेसिंग होके वैल्यू रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट इसको सेव हो जाएगा, इसके अंदर असाइन हो जाएगा. सो सी व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू. age is the variable, inside of it we have the number 20. अगर it is greater than or equal to 18, मतलब 20 if it is greater than equal to 18, then print yes, otherwise no. Print भी नहीं कर रहे. Store yes inside of the variable is adult, otherwise store no. So right now I have the value as 20, so ये yes करना चाहिए, and it did log that, right? Yes बोल रहा है यहाँ पे. Perfect. Now if I take this, like make it underage, and now the output should be no, because when we compare this, 12 is not greater than or even equal to 18. तो मतलब जिसकी भी एज है वो 18 से तो कम है, so वो अडल्ट तो नहीं है, तो yes नहीं होगा, no होगा. So let's try to do that and the expected result. So this is how the ternary operation works. ठीक है, and इसका use case बहुत ज़्यादा है when we shift to frameworks. Okay, तो अभी proper नहीं समझा तो भी ठीक है, but it is very simple, and once you like use it once or twice, you will understand क्या चल. Let's go back to the file. हमने ये already देख लिया, right? Type of वाला, it is going to show string. Sorry, teacher तो है भी नहीं है. Now we are done with this part as well. अब आते हैं next step, control flow. ठीक है, तो control flow का कोड लेता हूँ. डोंट वरी, मैं ये फंक्शन नहीं उठा रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको ब्लॉक स्कोप बनाया, राइट? यहाँ पे अगर मैं ये देखो, ये वेरिएबल को अगर बाहर लूँ ना, तो ये कॉन्फ्लिक्ट करेगा. व्हाट इज इट सेइंग? एक्स कैन नॉट बी रीडिक्लेयर्ड बिकॉज इट इज अ ब्लॉक स्कोप वेरिएबल. ब्लॉक है, ग्लोबल ग्लोबल ब्लॉक में मैंने इसको डिक्लेयर किया है, और इसके ऊपर एक और एक्स है, सो इट इज रेजिंग एन कॉन्फ्लिक्ट. दैट्स व्हाई आई चोज टू क्रिएट अ फंक्शन फॉर दैट. फाइन. Now when that is cleared out, I will just report. Wait a second. I'll paste that code over here and let's see क्या हो रहा है. Fine. X is a variable storing 10 inside of it, which is a number. What we are doing is, if X is smaller than 5, then we are printing X is less than 5. Make sense? Else if अगर X is smaller than 10, then we can say X is less than 10 but not less than 5. Fine. क्योंकि ये एक सीक्वेंस में होगा, पहले वो चेक करेगा कि क्या 5 से छोटा है. अगर ट्रू हो गया ये वैल्यू, अगर ये कंडीशन हो गया, ये जो क्या बोलते हैं इसको, कंपैरिजन कर रहे हैं क्या? एक सेकंड, लेट्स गो बैक. रिविजन करना जरूरी है ना, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू. कंपेयर कर रहे हैं. परफेक्ट. या वी आर डूइंग द comparison over here. We are taking the variable x which has the value 10, we are comparing it with a number 5, and if it is true कि x is smaller than 5, then वो पहला स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करे which is inside of this block. ठीक है, and once it does that, it will exit this out. वो सीधा यहाँ पे आ जाएगा. फाइन. ये सारे ब्लॉक्स को वो देखेगा भी. उसका काम यही है कि जो भी कंडीशन ट्रू होता है वहां पे एग्जीक्यूट करके मैं गायब हो जाऊँ. ठीक है, सो आई थिंक सो ब्लॉक का समझा. 10 इज नॉट स्मॉलर देन 5, सो ये लाइन तो एग्जीक्यूट नहीं होगी. दिस इज फॉर श्योर, राइट? क्या 10 से छोटा है? नहीं यार, 10 तो 10 के इक्वल है. तो अगर ये रहता, इज इट लेस देन और इक्वल टू, तो शायद ये लाइन एग्जीक्यूट होती. शायद क्या सच्ची में होती. बट व्हेन वी आर सेइंग x 10 से छोटा है क्या, नहीं, it is not going to evaluate, right? So it is going to go to the else block. Now else block doesn't have a condition with it. मैं parenthesis डालूंगा बिना तो error देगा. देखो रेड लाइन आ रहा है, right? So I don't need to have a condition. अगर ऊपर वाले ब्लॉक्स में से कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होता,
तो सीधा यहाँ पे आ जाएगा, एल्स में आ जाएगा, बोलेगा कि भाई ऊपर के कंडीशंस कुछ भी नहीं ट्रू है तो ये ट्रू रहेगा लास्ट। सो लेट्स सेव दिस थिंग and we expect to see this printed to the console. Right. X is 10 or greater. Fine. Now if I switch this number 5 कर देता हूँ, तो 5 is not less than 5. 5 is equal to 5. But 5 is less than 10. So X is less than 10 but not less than 5. So second statement should exist. Perfect. Hopefully you are getting the point. So ये चीजें जब मैं गिटहब पे पुश करूंगा तो ट्राई टू कॉपी पेस्ट इन द सेम मैनर दैट आई एम ट्राइंग टू डेमोन्स्ट्रेट एंड जस्ट प्ले अराउंड, तुमको भी समझ में आने लगे, राइट? लेट्स स्क्रैप दिस आउट फॉर नाउ, लेट्स गो बैक, लेट्स सी व्हाट वी हैव नेक्स्ट। हमने क्या देखा? ये वाला देख लिया, इफ एल्स देख लिया, राइट? नाउ लूप समझने की जरूरत है। नाउ वी आर गोइंग टू डू दिस वन। नाउ इफ आई सेव दिस कोड, एक स्पेस दे देना, मैंने एक वेरिएबल बनाया, इसका नाम दिया इटरेशंस। मतलब मैं चाहता हूँ कि इतने नंबर ऑफ टाइम्स कुछ चीजें एग्जीक्यूट हो, इतने इटरेशंस हो, तो मैंने उसको वैल्यू दिया 10। ठीक है, नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम डिफाइनिंग अ फॉर लूप। उसका स्ट्रक्चर देख लो, सिंटैक्स देख लो। फॉर लूप का ऐसा रहता है, फॉर कीवर्ड यूज करो, पैरेंथेसिस लो, पैरेंथेसिस के अंदर एवरीथिंग दैट इज रिलेवेंट फॉर लूप, जो कि एक इटरेटर होता है, काइंड ऑफ एन इंडेक्स, जो आप इंक्रीमेंट करते जाओगे या फिर डिक्रीमेंट करते जाओगे विद इन द स्पैन ऑफ द फॉर लूप एग्जीक्यूशन। ठीक है, एंड आई एम चेकिंग अ कंडीशन एवरी टाइम, क्योंकि आई डोंट वांट टू रन दिस इनफिनाइट टाइम्स, राइट? इफ आई ट्राई टू डू दिस, राइट, अगर ट्रू डालता हूं मैं एंड इफ आई ट्राई टू रन दिस, दिस इज गोइंग टू प्रिंट इनफिनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। अरे स्टॉप हो जा भाई, सॉरी, राइट? सो आई डोंट वांट टू डू दिस, सो आई विल हैव अ कंडीशन ओवर हियर। मेरे को भाई मेरा सिस्टम क्लास नहीं करवाना। So I have a condition, जब तक I is smaller than 10, ठीक है, इतने नंबर ऑफ इटरेशन से चाहिए ना मेरे को, 10 बार प्रिंट करना है मे बी, तो मेरे को बस इस एक कंपैरिजन यहाँ पे रखना है कि जब तक I छोटा है तब तक इसको रन कर भाई, उसके अलावा रन मत करना। ठीक है, दैट इज द कंडीशन आई हैव प्लेस्ड हियर, एंड एवरी टाइम ये ब्लॉक स्कोप एग्जीक्यूट होता है, आफ्टर दैट इट विल इंक्रीमेंट द इंडेक्स I। तो पहले अगर ये 0 है तो it will increment it to 1 once the console log has executed for one time. So I have, what is the expected thing? Then inside of the console log, तो for loop iterations लिखा है मैंने, I plus 1 किया। 1 क्यों ऐड कर रहा हूँ? क्योंकि 0 इटरेशन मतलब कंफ्यूजन होगा, राइट? तो बस मैंने उसमें 1 ऐड कर दिया एंड इट शुड डू दिस। मैंने 10 इटरेशंस यहाँ पे रखे थे, 0 to 9 इसमें गया ये for loop, but since I was adding a digit 1, it always took a digit next to the current index, right? So 1 to 10 we are getting. Perfect. Hopefully that is clear. Let's go back. Let's see how the other loops work. Fine. So we have a j variable. इसमें भी same thing कर रहा हूँ मैं. What I am doing is I am using a different for loop. ठीक है, it is a while loop. तो while loop क्या करता है, वो एक कंडीशन लेता है। वो क्या करता है, जब तक ये कंडीशन ट्रू है ना ब्रो, I'll do the work you have given. So what it is doing, console log कर रहा है जब तक j is less than iteration. Okay, fine. We do not have iterations over here. ये तो error दे देता, right? Thankfully I am experienced, so I was able to figure that out. Otherwise भाई on ही resolve करता है इसको। ठीक है, so जब तक j is smaller than 10 तब तक ये प्रिंट करो। Now I have used a unary operator जहाँ पे मैं j की वैल्यू इंक्रीमेंट करूँ। If I remove this thing ना, this will do the same thing जो infinite loop वाला कर रहा है। देखो प्रिंट होते जा रहा है, ठीक है। So if I don't stop this thing, my PC might die. So I'll stop that. I'll revert the changes. Now what happens? Every time it executes this block, right? It will make sure कि वो end पे j की वैल्यू इंक्रीमेंट भी करे। So we will get the same similar behavior जो for loop में आ रहा था। ठीक है, so whatever you prefer, you can use for loop and while loop, depends on your use case। ठीक है, काम दोनों का सिमिलर सा है। एक और चीज है फिर,
जो कि है ये डू वाइल। अभी ये भी मतलब ये मैंने तो टेस्ट भी नहीं किया कि एक्चुअली इसका क्या रहेगा। सो आई एम जस्ट मेकिंग दिस अप। मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक सेकंड सेव कर देता हूँ, इंडेंटेशन प्रॉपर रहता है तब समझ में आता है code क्या है। यहाँ पे भी इटरेशंस 10 है, एक न्यू वेरिएबल या की लिया है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज, यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक किया है डिफाइन, जो डू है, डू का ब्लॉक। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, और उसके बाद मैंने वाइल लिया है जिसके अंदर कंडीशंस है। ठीक है, तो डू वाइल क्या करता है ना, डू वाइल डज वन थिंग, ये पहले एक बार एक्शन को तो हमेशा एग्जीक्यूट करेगा। तो इट विल कम इनसाइड ऑफ दिस ब्लॉक, इसको एग्जीक्यूट करेगा, एंड इसके बाद इट विल चेक, ठीक है, वेदर द वैल्यू इज ट्रू, देन इट विल कंटिन्यू टू डू सो, राइट। तो यहाँ पे कीप अगर मैंने ये नहीं किया, राइट, तो ये भी इन्फिनाइट लूप में जा सकता है। लेट्स होप सो वो जाता है, ठीक है, इन्फिनाइट लूप में जा रहा है, राइट। सो आई नीड टू डू दिस थिंग, I need to increment the value of key. If I save this now, so it should print out something similar to this. So जब ये जीरो था, इंडेक्स जीरो था, ये तब भी एग्जीक्यूट हुआ, राइट, एंड ये 10th इंडेक्स को अवॉइड कर गया। व्हाई डिड इट डू दैट, ये तुम लोग इसका बिहेवियर देखना, मतलब इसको कंपेयर करना फ्रॉम ऑल द लूप्स दैट आई हैव डेमोन्स्ट्रेटेड फॉर नाउ। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एंड दिस इज द लीस्ट यूज लूप, ठीक है। तो यूजुअली यू विल वर्क विद दीज टू लूप्स ओनली। सो ये काइंड ऑफ एडिशनल समझो, स्किप किया तो भी चल जाए। नाउ कमिंग टू asynchronous program. Now I don't know if these things will work, but we need to try these out. ठीक है, so what I'm trying to do is, अभी asynchronous कोडिंग से पहले थोड़ा सा इसका इंट्रो रहेगा, कितना से डॉम ट्री अभी के लिए स्किप करते हैं। asynchronous कोड क्या होता है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड जावास्क्रिप्ट अ लिटिल बेटर। जावास्क्रिप्ट कैसे एग्जीक्यूट कर रहा होता है ना कोड को, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो जावास्क्रिप्ट डज दैट इन अ सीक्वेंशियल मैनर, मतलब लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा, 5 करेगा, ठीक है। एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स है, मतलब लूपिंग स्टेटमेंट, सॉरी लूपिंग बोल, इफ एल्स स्टेटमेंट्स है, तो वो कंडीशन से इवैल्यूएट करेगा, उस हिसाब से लाइन नंबर्स को एग्जीक्यूट करेगा या फिर स्किप करेगा, राइट। तो एक सीक्वेंशियल मैनर में हमेशा इसका एग्जीक्यूशन जाता है। बट टू हैंडल असिंक्रोनस टास्क, मतलब मल्टी थ्रेडिंग लेवल पे कुछ करना है, मतलब दो अलग टास्क आपको साथ में करना है, ठीक है। तो हाउ विल यू हैंडल दोस काइंड्स ऑफ सिनेरियोस, तो उसके लिए असिंक्रोनस कोडिंग रिक्वायर्ड रहता है। एंड asynchronous coding in JavaScript is very different because JavaScript does things on a single thread. वो multiple threads create नहीं करता, एक ही सीक्वेंस में चीजों को एग्जीक्यूट करना इसकी हैबिट है, इसकी प्रॉपर्टी है। वो सिंगल थ्रेड पे सारे प्रोसेसेस को क्यू करता है, सारे टास्क को क्यू करता है, लाइन लगवाता है उनकी, एंड वन बाय वन उनको एग्जीक्यूट करता है। तो कॉन्करेंट एग्जीक्यूशंस कैसे होंगे, मतलब दो टास्क है तो वो सिंक्रोनाइज कैसे करेंगे एक दूसरे से, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, वो कॉन्फ्लिक्ट कैसे अवॉइड करें। सो फॉर दैट व्हाट वी डू इज वी हैव 3 डिफरेंट वेज। पहला जैसे है सिंपल वे, ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं अपन, एक कॉल बैक इनिशियलाइज कर दे रहे हैं। callback is nothing but a function, see this function itself, that you have assigned to a statement. तो read file is a kind of क्या बोलते हैं function, hopefully this will run, this might throw an error, तो एरर देता है तो मैं बस कॉन्सेप्चुअली तुमको बता दूंगा तो समझ जाना उससे। बट व्हाट इट डज इज व्हेन इट इज डन रीडिंग दिस फाइल, नाउ वेयर इज दिस फाइल, this file is over here in the same directory, right? That's why I don't have to specify the path, C path के अंदर, users के अंदर, मेरा users, sorry I missed it, file मतलब ये same directory में तो I don't need to give that path वाला thing, it will directly go into this file. Let's see what is there inside of this file. बुली मत करो, ठीक है। तो अगर किसी का इंटेंशन अभी भी है कि रैंडम स्पैम करना है तो बुली मत करियो प्लीज। Let's go back. So once this thing is done, मतलब ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये ट्राई कर रहा है कि उस फाइल को रीड करे। So once the file has been read, this will add this function
which is known as a callback function to the queue कि फाइल रीड हो गया ब्रो, अभी ये फंक्शन को एग्जीक्यूट कर, अदरवाइज मत कर. ठीक है. सो लेट्स सी इफ दिस वर्क्स, although I am skeptical it won't. देख लेते हैं. Right. So read file is not defined. We'll have to do that. And I don't really know how to do that. Const fs require fs. I guess. Yes, bro. तो अभी क्या करते हैं ना, अभी लेते हैं चैट जीपीटी की हेल्प, बिकॉज इवन आई एम थोड़ा सा कंफ्यूज. मैंने इसको प्रैक्टिस नहीं किया, आई हैड नो टाइम. तो चैट जीपीटी पे जाते हैं. कोई भी नहीं बोलेगा कि मेरे को पढ़ाने नहीं आता. ठीक है. टेक सम टाइम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. स्किप करने में मजा क्या है, आ गए तो कर लेते हैं. राइट. सो आई विल पेस्ट दैट कोड. define me a file function for this to what ChatGPT, are you awake? Yeah, it is awake. So देखो मैंने मॉड्यूल तो बराबर से किया, मेरे को मॉड्यूल तो बराबर मालूम, बट इट हैज बीन क्वाइट सम टाइम, जब तक बहुत पहले ये सब. सो देयर इज अ फंक्शन, वो क्या कर रहा है, इट इज बीइंग डिफाइंड यूजिंग fs. f is nothing but a module that I'm importing, और वो Node.js में बिल्ट है. तो कंफ्यूज मत हो, इतना पार्ट तो फुल इग्नोर मारो. तुम समझो कि अगर हमारे पास कुछ फंक्शन रहता दैट वुड लेट अस रीड द फाइल जिसका नाम है file.txt एंड इट इज लोकेटेड ओवर हियर, तो क्या होता, उसका बिहेवियर क्या होता, इस लाइन, इन लाइन ऑफ कोड का बिहेवियर क्या होता. सो द बिहेवियर शुड बी, जब ये रीड करके फिनिश्ड है, जब रीड हो जाता है, तब ये कॉल बैक फंक्शन को एग्जीक्यूट कर. तो इसके अलावा जो भी चीजें मैं रखता हूँ ना, सो executes prior to the reading of file. So since it is going to take some time to go into this file and read this text, it will first console this, क्योंकि उसको मालूम है कि इसको टाइम लगने वाला है. एंड अभी जब तक ये टास्क हुआ नहीं है, तब तक वी आर नॉट गोइंग टू फायर दिस फंक्शन. तो उसके बाद कुछ और काम है क्या? हाँ, उसके बाद एक और काम है कि console लॉग करने बोल रहा है ये प्रोग्राम. सो लेट्स सी इफ it does the expected thing. Okay, it does. Executes prior to the reading of file. Error. No such file in the directory. Okay. So directory का path गलत है बस. तो I will correct that path. I'm mock लिख देता हूँ. ठीक है. तो directory बोल रहा है कि JavaScript है. तो JavaScript के अंदर एक फोल्डर है, राइट, mock. तो mock के अंदर मैंने file.txt रखा है. मैंने path जब फिक्स कर दिया, then it should work just as expected. So पहले ये लाइन एग्जीक्यूट कर रहा है, बिकॉज इट इज गोइंग टू टेक सम टाइम. इवन दो इट इज प्रेजेंट अबव दिस स्टेटमेंट, इट इज स्टिल एग्जीक्यूटिंग द सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट, मतलब ये वाला कंसोल वाला, बिकॉज दिस टास्क इज गोइंग टू टेक सम टाइम. एंड ये सिंक्रोनिसिटी मेंटेन करता है, राइट, कॉन्करेंट थिंग्स को करता है. तो जब तक इसके रिसोर्सेज प्रिपेयर्ड नहीं है, इसका प्रोसेसिंग पूरा नहीं हुआ, तब तक जावास्क्रिप्ट वेट नहीं करेगा. इट विल एग्जीक्यूट द फर्दर थिंग्स, राइट. Hopefully you got the idea. So पहले इसने ये execute कर दिया, then it did this. ठीक है. So I'll just go back to the PPT, and PPT नहीं है अभी स्क्रीन पे, अभी आ जाएगा. Let's PPT की जरूरत है क्या? नहीं, I think कोड की जरूरत है. So let's go back to the main.js फाइल वाला, ये वाला क्लोज कर. So we saw कि simple callback functions कैसे वर्क करते हैं. लेकिन यहाँ पे कुछ इशू है. ऑल्दो इट इज नॉट मेजर, बट इशू क्या है ना, ये रीडेबल ठीक से नहीं. मतलब इसके अंदर क्या हो रहा है ना, प्रॉपर समझ में नहीं आ रहा. ऑल्दो समझ में आना चाहिए इफ यू आर अ गुड कोडर, बट हाउ कैन वी मेक दिस मोर रीडेबल, लाइक मोर क्लीनर वे, राइट. तो उसके लिए थोड़े डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन होते हैं. वन ऑफ दोज आर यूजिंग प्रोमिसेस.
promises क्या होते हैं? More structured and readable way to work with asynchronous code. So as we saw, this is asynchronous code because इसका behavior कैसा है? पहले ये execute हो रहा है line number 22. Then whatever the result is being provided by this line number 18, that is being printed. ठीक है? तो ये asynchronous code है. तो इसको अगर readable बनाना है और इसको better structure देना है, then we go with promises. ठीक है? तो इसमें और इसमें सिमिलैरिटी बहुत है, बस इसका इम्प्लीमेंटेशन और लाइक यूज केस थोड़ा सा वैरी करता है. तो प्रोमिसेस आर वाइडली यूज्ड क्योंकि बहुत रीडेबल कर देता है. आई जस्ट गिव यू अ थिंग. प्रोमिसेस क्या होता है मालूम है? इसके अंदर 3 स्टेट्स होता है. एक होता है फुलफिल्ड, एक होता है रिजेक्टेड, एक और क्या होता है? एक और होता है, राइट? आई हैव फॉरगॉटन. लेट्स गो बैक टू ChatGPT एंड ट्राई टू लर्न दैट. What are the 3 of promises in JS? Yeah, pending, right? तो यहाँ पे बहुत सारा दे देगा, ये इतना कंटेंट चाहिए भी नहीं. तो पेंडिंग इज व्हेन इट इज ट्राइंग टू डू दैट एक्शन. टास्क को जब वो प्रोसेस कर रहा है तो वो पेंडिंग में है, मतलब भी उसका कुछ रिजल्ट आया. फुलफिल्ड इज व्हेन जब वो टास्क सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, देयर हैज बीन मतलब वो रिजॉल्व हो गया बेसिकली. नो उसके मतलब वो टास्क एग्जीक्यूट होते वक्त कोई एरर नहीं आया. एंड रिजेक्टेड इज व्हेन द टास्क फेल्ड समवन, राइट? So these are the 3 states we usually study. So let's come back to the code. Let's copy the stuff. Let's take it over to this index file. And maybe we do not require this one now, right? Because we are using promises. Will it work? I hope so. Let's see. Void है, promise return नहीं कर रहे. It might not work. रीड फाइल का पाथ एरर है. नहीं पाथ एरर नहीं है. अभी तो रीड वाला करके दिखाया ब्रो, देखना. अरे file.txt देखना, यूजेज एग्जांपल. तू थोड़ा पास्ट का एरर में रुका हुआ है क्या? देखना यहाँ पे प्रिंट तो हुआ है, बोलिए मत करो. This is just using promises. So I need to return a promise, I think so. How can I work with promises? Let's see. So new promise create करना पड़ेगा. So let's see. Right. New promise. क्या लेगा? Resolve और reject लेगा. Right. These are the states. And whatever I do is we'll have to take help of ChatGPT again. चलो. Promises थोड़ा है अजीब सा. हाँ, वो एक्चुअली ऐसे डिफाइन नहीं करना पड़ता है. व्हेन यू आर एक्चुअली कोडिंग आउट ना, तो ऐसा ऑब्जेक्ट यूज करके न्यू कीवर्ड करके यूजुअली यू डोंट डू दैट स्टफ. सो यहाँ पे देखो कितना कॉम्प्लेक्स है दिस थिंग. तो वी डू नॉट वांट टू सी दैट. वी जस्ट वांट टू सी द प्रैक्टिकल थिंग, राइट? कि हाउ इट इज गोइंग टू वर्क. लेट्स से हमारे पास एक रीड फाइल वाला फंक्शन रहता, इनबिल्ट रहता, तो वो कैसे वर्क करता? ठीक है. तो सिंस इट इज रिटर्निंग अ प्रॉमिस, इफ आई हवर ऑन दिस ना, it is saying कि it is going to return a promise of type n, right? So जब ये return कर रहा है एक promise, then only I can attach these types of blocks to it. First block is then. मतलब अगर ये promise resolve होता है, properly execute हो जाता है, तो उसको एक डेटा दे दो. एक callback function है इसके अंदर, देखो. ठीक है. इसको एक डेटा दे दो, मतलब जो भी रिजल्ट वैल्यू आया वो इसको दे दो, एंड फिर वो कंसोल लॉग कर देगा फाइल कंटेंट, राइट? एंड अगर कोई एरर आता है तो वो एरर को कैच कर रहा है. ठीक है. तो काइंड ऑफ एरर हैंडलिंग दे रहा है, राइट? अगर प्रॉपरली रिजॉल्व हो जाता है प्रॉमिस, तो ये ब्लॉक को एग्जीक्यूट करो यूजिंग दिस कॉल बैक फंक्शन. अदरवाइज इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करो यूजिंग द कैच ब्लॉक, राइट? तो इसको देन ब्लॉक एंड कैच ब्लॉक बोलते हैं ऑफ प्रॉमिसेस. लेट्स ट्राई टू रन दिस अगेन एंड इट शुड वर्क फाइन. अच्छा, पाथ वापस रख दिया.
तो मॉक वही करूंगा बोला था भाई। एचओपी यार, अभी तो चेंज किया तभी तो रॉन्ग हुआ। देखना यार, पहले एक वर्क किया था देख, बात चेंज हुआ जब मैंने अभी लाइक रीसेंट कोड उठा के लाया, राइट? सो इट इज एग्जीक्यूटिंग। कूल, होपफुली प्रोमिसेस कैसे वर्क करते हैं अंडरस्टूड है। यू डोंट नीड टू नो हाउ दिस वर्क्स, इवन आई डिड नॉट नो। सो होपफुली ठीक है, ठीक है, चलो मूव ऑफ करते हैं। असिंक कोड कैसे वर्क करेगा? लेट्स गो बैक, इसका कोड लेके आते हैं, प्रोमिसेस को उड़ा देते हैं इधर से। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ, इसको मैं बोल रहा हूँ कि ये फंक्शन असिंक्रोनस है। दिस फंक्शन इज asynchronous, and what I'm doing is I'm running this पहले वाला अपने को कोड लाना पड़ेगा, जो फाइल रीड करने के लिए सर we'll have to fix this over here. ओके, मैंने बहुत गलत जगह पे चेंजेस कर दिए। सो अगेन इफ वी हैव दैट रीड फाइल वाला फंक्शन, समझ लो वो प्रोवाइडेड है, राइट? बिकॉज लाइब्रेरीज के थ्रू आता है, यूजुअली वी यूज मल्टर टाइप की लाइब्रेरीज टू रीड फाइल्स, ठीक है? तो await has no effect on the type of expression, है। ये भी इसके लिए भी हेल्प लेना पड़ेगा। चलो कर लेते हैं, क्या करना है, और जितना एम्बैरेस होना एक ही बार होगा तो ठीक है भाई। आई नो यू नो बेटर। चैट जीपीटी के सामने हम हमारा एग्जिस्टेंस क्या है, राइट? सो एफएस लाइब्रेरी है एंड इज रिटर्निंग अ फाइल। हाँ, सो इट इज ओके। आई नीड, सही है, वो चेंज नहीं करने की जरूरत थी, क्योंकि async एंड await आल्सो वर्क्स ऑन प्रोमिसेस। जस्ट ये थोड़ा सा और बेटर हो जाता है इफ वी कम बैक हियर। async and await का वो देखो, इसका यूज केस क्या है। another method to work with asynchronous code, just like the above two methods, this is better readable as everything is written in a single line. So the problem with promises was कि उसके लिए डॉट देन डॉट कैच एंड ऐसे ही नेस्टिंग भी कर सकते हो। यहाँ पे आप नेस्टिंग करके डॉट देन, ठीक है? तो जितने भी डॉट देन मैं लगाऊंगा ना, तो जब तक कोई एरर नहीं आ रहा है फ्लो में, तब तक ये एग्जीक्यूट होता जाएगा। बट ये कॉम्प्लेक्स है, राइट? कि कितने डॉट देन लगेंगे, राइट? सो उसको लाइक बेटर रीडेबल करने के लिए देयर इज अ वे वेयर वी यूज asynchronous functions. We create asynchronous functions using async कीवर्ड एंड फिर फंक्शन का नेम। इसके अंदर तीन चीजें देखो, ये तो एरर हैंडलिंग है बस। इफ वी नो फॉर श्योर इट इज नॉट गोइंग टू थ्रो एन एरर, तो हमको एरर हैंडलिंग करने की जरूरत है, ठीक है? अभी इसका बिहेवियर सिमिलर होना चाहिए जैसा प्रोमिसेस का यूज किया था और कॉल बैक फंक्शन का यूज किया था तब, ठीक है? सो या वी आर गेटिंग द सिमिलर बिहेवियर। द एग्जीक्यूट console log वाला स्टेटमेंट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, इवन दो इफ आई प्लेस दिस अबव, ओके? इसका ऑर्डर से कुछ मतलब नहीं पड़ेगा, जब तक रिजॉल्व नहीं हो रहा है ना, तब तक वो प्रिंट नहीं कर रहा, मतलब वो एग्जीक्यूट ही नहीं कर रहा। JavaScript is patiently waiting for the task to finish first, and whatever state it returns, whether it is rejected, error है तो error console log कर देगा, and if it is resolved, then proper जो भी data यहाँ पे मिल रहा है उसको, वो data console. So let's revert back and let's try to understand वो try block किस काम का है। तो अगर इतने set of statements में से कोई भी statement अगर error throw करता है, जैसे कि ये एरर है, राइट? अभी पाथ गलत है तो वी आर एक्सपेक्टिंग एन एरर, तो वी वांट कि कैच ब्लॉक उसको कैच कर ले एरर को और एरर को लॉक कर दे। तो लेट्स सी, सिंस देयर वाज एन एरर एंड वी हैड एन कैच ब्लॉक, इट like right away gave us that error, right? Console log कर, and if I don't specify this, right, what will happen? It will still throw an error, but I think so बहुत abrupt रहेगा। एरर देखो, का नेम नहीं दे रहा है बस। हाँ सी,
यहाँ पे ना कुछ अजीब भलता सा ही एरर आ रहा है, तुमको समझ में नहीं आएगा कि एरर एक्चुअली अकर कहाँ हुआ। लाइन नंबर 288, यहाँ पे तो मैंने 50 भी क्रॉस नहीं किया, राइट? सो दैट इज द थिंग। एंड इफ यू थिंक सी ओवर हियर, द लाइन नंबर या फिर द प्लेस वेयर द एरर इज बीइंग थ्रोन, वो तुमको समझ में आएगा कि दिस लाइन इज throwing an. So that's why to handle the errors, we specify try and catch block. ट्राई मतलब ये सारे सीक्वेंसेस को, इतने सारे स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करो, एंड इफ देयर इज एन एरर तो एंड दैट सीक्वेंशियल प्रोसेस एंड थ्रो दैट एरर, एंड इफ देयर इज नो एरर देन प्रॉपर्ली यहाँ से एग्जीक्यूट होने के बाद बाहर आ जाओ, ये स्कोप के बाहर आ जाओ। होपफुली तीनों टाइप की अपन ने असिंक्रोनस कोड देख लिया है कि हाउ वी वर्क विद असिंक्रोनस कोड। ठीक है, असिंक्रोनस कोड के तीन टाइप्स। पहला था कॉल बैक फंक्शन यूज करके। इसके लिए अपने को बस एक चीज लगेगा कि वो है रीड फाइल वाला फंक्शन। तो मैं एक रीड फाइल वाला फंक्शन यहाँ पे दे देता हूँ। whenever you try to work with this repository, right? इसके लिए ये लगेगा और कॉल बैक के लिए हमको कॉल बैक करना। So I have saved that inside of the main.js के अंदर तुमको मिल जाएगा। होपफुली तीनों वेज दिख गए, समझ आ गया असिंक्रोनस कोडिंग क्या है, हाउ डज जावास्क्रिप्ट हैंडल दैट, तो इंटरमीडिएट लेवल पे अपन क्या क्या सीख सकते हैं, काइंड ऑफ वो चीजें दी। तो पहली चीज है हायर ऑर्डर फंक्शंस। ओके, हायर ऑर्डर फंक्शंस आर सम फंक्शंस, और ये भी देखो डिफरेंट है, राइट? बाकी लैंग्वेजेस में यू डोंट रियली फाइंड सच काइंड ऑफ बिहेवियर। यहाँ पे फंक्शंस कैन टेक इन अनदर फंक्शन and they can do the certain processes. ठीक है, यहाँ पे देखो there is a function named as map array. Okay? It is taking a array which is going to be, I think so, जिसको iterate करना होगा। The idea behind higher order functions are कि वो functions accept कर सकते हैं, and within the function block they can execute the external function, right? So यहाँ पे कुछ भी function ले सकते हो तुम, and what they are doing is maintaining an result array, and they are doing. So let's try this. Let's take this code and line by line try करते कि क्या हो रहा है। So there is a numbers array जिसके अंदर कुछ numbers दिए हुए हैं 1 to 5, ठीक है? Now what there is another const, and what it is doing is इसके अंदर मतलब ये एक ऑपरेशन रन कर रहा है which is this function itself, ठीक है? तो ये फंक्शन जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा, right, whatever thing it returns, it will assign that value to doubled। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं अपन, नंबर्स पास कर रहे हैं, मतलब ये एरे है। तो यहाँ पे अगर console लॉग करें array, so it will print the numbers array। Perfect, hopefully that is understood। Then second argument is a function, if you can see। So we are giving a function input to a map array function in नाम is। ये फंक्शन क्या कर रहा है, वो x को ले रहा है और x को डबल कर दे रहा है, मल्टीप्लाई कर दे रहा है, राइट? सो एंड तो मतलब यहाँ पे समझ लो अगर फंक्शन को प्रिंट करोगे तो इट विल प्रिंट एज इट इज, फंक्शन का जो भी ब्लॉक है। नाउ फॉर कॉन्स्ट आइटम ऑफ एरे, मतलब ये जो नंबर्स लिस्ट इसमें पास किया, तो ये इसको इटरेट करेगा। पहले 1 पे आएगा, फिर 2 पे आएगा, 3 पे आएगा, 4 पे आएगा, 5 पे आएगा। तो जब वो 1 पे है तो रिजल्ट डॉट पुश क्या कर रहा है, फंक्शन फंक्शन क्या है जो एक्सटर्नली अपन ने पास किया, विच इज ट्राइंग टू डबल दैट थिंग। तो द एलिमेंट आइटम विल बी फर्स्ट इटरेशन में इट विल बी 1, 1 multiplied by 2 is 2, right? 2 multiplied by 2 is 4, then it will push 4 to results, sorry, singular है।
3 multiplied by 2, 6, 4 multiplied by 2, 8, 5 multiplied by 2, 10. That is the expected output it is given. Now, this might seem confusing. यहाँ पे सारा जो भी अभी तक सीखा है ना, उसके बाहर का कुछ भी नहीं है, लेकिन kind of एक mix of code है, right? We are creating an array over here, which is empty. We are trying to iterate, right? For loop use किया, उसके अंदर const लिया, item लिया. This is a new keyword for you. So of is something that helps us to iterate an array, right? Of array मतलब आइटम, मतलब पहले आइटम 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, 4 बनेगा, 5 बनेगा, उसके बाद एग्जिट हो जाएगा ये फाइल. काइंड ऑफ दैट इज द सेंस, राइट? सो item is iterating over numbers array which we are passing as an argument, right? And what we are doing is, in the result, which is an array over here which is being maintained internally, we are pushing, okay? We are pushing a new element which is doubling the item, current item. तो इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो no error will be there. It gave us the expected output. Perfect. A function can return a function. So you can see I have created a function that is known as power. It is accepting an argument or parameter. ठीक है, parameter वही है. And वो क्या करेगा, एक और function return करेगा which is going to be math.power. Math.power क्या है? Math is an inbuilt object, ठीक है, जो मैथमेटिक्स के फंक्शंस हमको देता है. लाइक पावर, POW इज पावर, मतलब a number raised to something, right? So math.power base जो हम इसको पास करेंगे and exponent जो हम इसको पास करेंगे. तो let's see how this can work. Const square, हमको अगर किसी चीज को स्क्वायर करना है, राइट, तो हम पावर ऑफ 5 करेंगे. Let's go back to this over here. पावर ऑफ 5 पे करेंगे, 2 करेंगे, राइट? एक्सपोनेंट क्या रहता है, किसी चीज का स्क्वायर चाहिए रहता है तो we take the power as 2, right? And for similarly क्यूब चाहिए रहेगा तो we'll take the power as 3. Perfect. And now if I try to console log, now these variables also are kind of functions. So square को जो भी मैं वो दूंगा ना, लाइक एक आर्ग्यूमेंट दूंगा ना, वो एज अ बेस ट्रीट करेगा, बिकॉज इट इज रिटर्निंग अ फंक्शन, राइट? दिस पावर फंक्शन. तो अगर मैं 2 देता हूँ तो ये 2 रेज टू 2, बिकॉज 2 इज द बेस. डिफरेंट नंबर 3 लेते हैं, तो 3 is the base, and over here for square the exponent is going to be 2, so it is going to do 3 raised to 2. The answer होगा 9, I think so. Hopefully 9. Yeah, lovely. And for a similarly cube करना है तो console log करना पड़ेगा हमको. क्यूब कर सकते हैं, पावर क्यूब करेंगे. 3 का क्यूब क्या रहेगा, मेरा मैथमेटिक्स बहुत स्लो, so we got both the out. Perfect. So hopefully you see कि क्या हायर ऑर्डर फंक्शंस क्या कर पा रहे हैं. बहुत ये भी quirky kind of behavior है इसका. You don't usually find कि एक फंक्शन के अंदर एक फंक्शन रिटर्न होगा. मतलब दूसरे लैंग्वेजेस में तो ये चीज तक तो लेके लड़ाई होती है कि एक बार में 2 वैल्यूज रिटर्न नहीं कर सकते एक फंक्शन. यू नीड टू क्रिएट एन एरे फॉर. बट यहाँ पे जावास्क्रिप्ट कुछ अजीब ही कर रहा है, ये फंक्शन भी रिटर्न करते हैं, राइट? सो थोड़ा सा क्वर्की बिहेवियर है, थोड़ा सा अलग ही है, डिफरेंट है इसका. सो इसके बाद क्या होता है ना, टू अंडरस्टैंड क्लोजर्स फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड लेक्सिकल एनवायरनमेंट. सो इसके लिए थोड़ा सा ChatGPT पे जाता है, लाइक आई सेड ChatGPT का यूज तो करना ही पड़ेगा. व्हाट इज अ लेक्सिकल. बिफोर सबमिटिंग दिस अपने एंड से कुछ भेज देता हूँ, नहीं तो तुम लोग बोलोगे मेरे को आते ही. लेक्सिकल एनवायरनमेंट इज काइंड ऑफ व्हेन यू रन अ जावास्क्रिप्ट फाइल, राइट? तो उसका एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है. उसके अंदर है ना, जो भी वेरिएबल्स एंड फंक्शंस डिफाइंड है
वो काइंड ऑफ उसके लेक्सिकल एंटिटीज है, राइट? तो वो स्टोर होता है। एंड एक लेक्सिकल एनवायरनमेंट है ना, ग्लोबल स्कोप होता है, और उसके बाद तुम्हारे फंक्शन के भी खुद के लेक्सिकल एनवायरनमेंट होते हैं, ठीक है? क्योंकि हाउ कैन आई फंक्शन देखते हैं अपन। सिंपल सा फंक्शन, ठीक है। सो समझ लो ये फंक्शन ज्यादा, ये फंक्शन है, राइट? और ये ग्लोबल में लूपिंग तो है, बट इसके अंदर जो भी चीजें डिफाइंड है, लाइक ये न्यू न्यू वेरिएबल है, ये बाहर एग्जिस्ट तो नहीं करता है। तो दैट इज व्हाई इट इज हैविंग इट्स ओन लेक्सिकल एनवायरनमेंट। ये फंक्शन का लेक्सिकल एनवायरनमेंट एक सेपरेट सा रहेगा मेंटेन, ठीक है? सो ये डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है काइंड ऑफ। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन लेक्सिकल एनवायरनमेंट। सो जितने फंक्शंस होंगे और जितना रिकर्सिव फंक्शंस होगा, राइट? रिकर्सिव फंक्शंस का भी कॉन्सेप्ट होता है, यू विल लर्न अबाउट दैट व्हेन यू डू डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह। तो वहां पे कैसा रहता है, फंक्शंस के एवरी फंक्शन विल हैव इट्स ओन लेक्सिकल एंड somehow they share their lexical environment। and how does that work out, हम क्लोजर्स में पढ़ेंगे। तो पहले लेक्सिकल एनवायरनमेंट देखते हैं थोड़ा सा। लाइक एआई का क्या स्टार्ट ठीक है, राइट? इसमें सो often simply referred to as an environment, perfect, is a fundamental concept in JavaScript। also मतलब बाकी लैंग्वेजेस में भी है, if someone else is like pro at other languages, they might be knowing about this, okay? So environment record, reference to outer environment, kind of ये सब चीजें, ठीक है? तो एक ग्लोबल स्कोप है, मैंने बताया था ना कि ब्लॉक स्कोप होता है, राइट? द एंटायर फाइल इज द ग्लोबल स्कोप ऑफ दिस जावास्क्रिप्ट फाइल। देन स्पेसिफिक फंक्शन हैव इट्स ओन ब्लॉक स्कोप्स, राइट? सो उसके अंदर कुछ डिफाइन करोगे तो वो सेपरेटली स्टोर होता है, ऐसा सब। तो स्कोप्स का जो डिफरेंशिएशन है वो काइंड ऑफ कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करता है लेक्सिकल एनवायरनमेंट के साथ, ठीक है? सो इसको बहुत डीप में अंडरस्टैंड करना जरूरी नहीं, बट यस पता जरूर होना चाहिए कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है। नाउ व्हेन वी हैव अंडरस्टूड अबाउट लेक्सिकल एनवायरनमेंट, we are good to go with understanding closures, okay? How will closures work out? इसको कॉमन स्क्रैप आउट करते हैं, लेट्स सेव दिस थिंग एंड लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग इन दिस फाइल। So we have created a function, outer function. What we are doing is we are creating a constant, so it should not change in the span of this block, right? Block scope रहता है const, perfect है वो, ठीक है? So if I create a const outside and if I name it outer var, it is not going to throw an error, perfect. But if it was an let me var keyword, it would throw an error. Hopefully it does. Maybe it mention करना नहीं करता, mention करना जरूरी नहीं है, बट या वार मत यूज करना, बेसिकली बस मेरा वही इंडिकेशन है। तो कॉन्स्ट क्रिएट कर रहे हैं अपन, वी आर असाइनिंग अ स्ट्रिंग टू इट एंड इट इज सेइंग आई एम फ्रॉम आउटर फंक्शन, ठीक है? सो आउटर फंक्शन क्या है, ये है, राइट? आई एम फ्रॉम आउटर फंक्शन। देन दिस फंक्शन इज इनर फंक्शन। वो बोल रहा है कि मैं फंक्शन के अंदर वाला फंक्शन, और इसके अंदर क्या कर रहा है, ये आउटर फंक्शन को ये, मतलब ये वेरिएबल तो आउटर फंक्शन के अंदर है ना, विल इट बी एबल टू प्रिंट इट आउट? तो इनर फंक्शन हैज एक्सेस टू आउटर फंक्शन, यहाँ पे लिखा तो है, बट इज इट ट्रू? लेट्स ट्राई टू रन दिस एंड सी। या इट इज एबल टू एक्सेस दैट। तो जो लेक्सिकल एनवायरनमेंट है ना, तो चाइल्ड फंक्शन का लेक्सिकल एनवायरनमेंट हैज एक्सेस टू द पेरेंट फंक्शन का लेक्सिकल एनवायरनमेंट, राइट? ऐसा सीन होता है। तो इसको क्लोजर्स बोलते हैं काइंड ऑफ। तो अगर कुछ और भी करें ना, नेवर माइंड, इसको मैं डीप में नहीं जाता। काइंड ऑफ यही एसेंस है इसका, कि जो नेस्टेड फंक्शन है वो काइंड ऑफ ग्लोबल मेमोरी को रीड कर सकता है, बट जो ग्लोबल मेमोरी है इट कैन नॉट गो इनटू ब्लॉक स्कोप और वहां के वेरिएबल्स को टच नहीं कर सकता, राइट? सो even though we have not defined a outer variable for this function block scope, it is able to get this outer variable and print it out because it is the lexical child of the outer function, ठीक है? whatever I say ना, अब यहाँ पे मैं कुछ बनाता हूँ कौन सी
For some reason it does not take name person properly. Okay? See, so this function has its own lexical environment. ठीक है, इसके अंदर जो भी definitions होंगे वो तो है ही, लेकिन इसके parent के पास जो कि global ये फाइल है, राइट, ग्लोबल फाइल जो है उसके अंदर जो ग्लोबली डिक्लेयर्ड है पर्सन एज अ कॉन्स्ट वेरिएबल, इट इज ऑल्सो एक्सेसिबल, मतलब it is sharing the lexical environment of its parent, right? And even if I try to bring that console log inside of here, it will still have the access to the outer function. See, so that is how their lexical environment is being shared and maintained. क्लोजर थोड़ा और डीप में जाता है वैसे तो, लेकिन आई वोंट गो इनटू दोस थिंग्स. बस मेमोरी का शेयरिंग देखो, अगर वही चीज मैं यहाँ पे करूँ ना, console log outer variable, right? Although its name is outer variable, इसको यहाँ पे करता हूँ, ठीक है, सारे लाइंस ऑफ कोड एग्जीक्यूट होने के बाद ही ये हो रहे हैं, राइट? So even though it is named as outer variable, it is inside of the lexical environment of this block. So it is not accessible in global scope. So if I run this file, it is going to throw an error. See this, outer variable is not defined. For this environment, there is no variable named as outer var. Perfect? या फिर इसको स्पेल गलत किया हूं मैंने, उस वजह से भी हो सकता है, बट या आई एम नॉट ट्राइंग टू हाइड समथिंग फ्रॉम यू, तो आई विल डू दिस. प्रॉपरली स्पेल्ड है, देख लो, ठीक है, डोंट ब्लेम मी. And it still says कि outer variable is not defined, even though it is defined, but it is for a different lexical environment. ठीक है, ये बहुत आसानी से समझने वाली चीज तो नहीं है, बट या इफ यू वर्क अ लॉट विद दीज थिंग्स समझ में आने लग जाए, ठीक है. एंड दिस इज नॉट द एंड फॉर क्लोजर्स, इससे भी और अंदर अंदर जाता है चीजें, ठीक है. यू विल अंडरस्टैंड डॉक्यूमेंट्री. सो जो HTML elements होते हैं ना, we'll do this using this index.html file. क्या करते हैं, अब console की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसे. Let's close this out. Since we have gotten into the flow, अभी समझो. See, I have an HTML document. Proper मैंने इसको format करके रखा है. There is a doc type declaration that says कि that this document is of HTML format. There is a HTML tag that is opening over here and closing right beneath. Highlight हो रहा है, देख लो. Okay. Language that we are preferring is English. There is a head tag जिसके अंदर थोड़े से मेटा डेटा जा रहे हैं. UTF-8 है, viewport के related कुछ है. Title of the page is going to be here, right? So when I go live with this, the title is going to say the real time blocks, right? So what we are going to do is, there is a header जो कि कुछ नहीं है, बस ये nav bar है, कुछ भी नहीं रखा उसके अंदर. What we are trying to do is, whatever input we give here, right? Title, sub, there is a alert message, then it adds that thing to the document. ठीक है, it is saying undefined, so I must have messed up something. लेकिन देख लेते हैं उसको ठीक कैसे कर सकते हैं, ठीक है, when I try to implement this. तो what we can see here is a body, ठीक है, बॉडी के अंदर एक हेडर है और एक मेन है. Now if we come back to the PPT, what we will find is there is an HTML root, which is nothing but the enclosing tag, the opening and enclosing tag of the HTML document itself. इसके अंदर एक ट्री क्रिएट हो रहा है, राइट? whatever you are placing inside of it, it is creating a tree. तो सॉरी, ये रूट नहीं रहेगा, ये बॉडी रहेगा. क्या बॉडी रहेगा? कि रूट के अंदर क्या क्या जा रहा है, हेड भी जा रहा है और बॉडी भी जा रहा है. तो बॉडी के अंदर क्या क्या जा रहा है, वी आर मोर फोकस्ड ऑन दैट बिकॉज दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू शो ऑन द स्क्रीन, राइट? सो वी हैव एन हेडर टैग व्हिच इज दिस, and we have a main tag which is this, right? Inside of these things we can have more tags जो header के अंदर होंगे. figure, right now there is no figure over here. We can have a figure tag, just say hi,
राइट। फिगर के अंदर वैसे तो इमेज रखते हैं, बट समझ लो कि यहाँ पे इमेज डालता है, ठीक है। सो हेडर के अंदर एक फिगर भी आ गया और एक h1 भी आ गया, जस्ट हाउ वी वांट टू सी, राइट। एक फिगर है, एक h1, और अभी के लिए मीन के अंदर क्या है, दो सेक्शंस है। तो मीन के अंदर ऐसे दो सेक्शंस है क्या? लेट मी जस्ट ट्राई टू शो यू दिस। देयर आर टू सेक्शंस, सी, there is a opening section over here, there is a closing for this. Similarly, there is another section. One section is for block container. So whatever blocks that I'm creating, those are being contained over here, right, in this region. तो ये block container का section, fine. Similarly, जो form container, it is for this, the form that we have placed over here. Styles को ignore करो. The important part is the functionality, कि JavaScript कैसे इसको functional बना पा रहा है, right? So these are the two things. मैं explain कर देता हूँ, okay? JavaScript का कोड अपन स्क्रैच से लिखने की कोशिश करें, ठीक है। अब मैं इसके अंदर क्या किया हूँ, एक डमी क्रिएट किया, आर्टिकल, ओके, सेक्शन के अंदर एक आर्टिकल which reads blog, subtitle, blog body content, and the author is general. And this is nothing but something that which is static, which does not change, right? This is static. If I remove this part, if I save this, it will go away. And if I try to add more, journals, law, this is going to show undefined. So let's say undefined only. Smart रहते हैं ना वो. Blog body. If I enter, it says the blog was added. If I say OK, it gets added, right? So this functionality is what we want to achieve. So how it is going to add it? जो भी डेटा मैं यहाँ पे इनपुट कर रहा हूँ ना, आई एम ट्राइंग टू एक्सेस दैट इन द जावास्क्रिप्ट, ठीक है, scripts.js वाला फाइल. I'll get into that. And when I'm doing all the processes, मैं जब ये सारा चीजें रीड कर दे रहा हूँ, प्रॉपर उसको फॉर्मेट कर दे रहा हूँ, then I'm creating a article for it and I am appending it to the section having ID. See this ID selector, block container. इसको सिलेक्ट करके आई एम लाइक अपेंडिंग दैट कार्ड इटसेल्फ, राइट. वो जब मैं कोड करूंगा यू विल गेट टू नो. सेकंड इज द फॉर्म, ठीक है. नाउ लेट्स गो इनटू द फॉर्म वाला कंटेंट. इसके अंदर क्या है हमारे पास, एक फॉर्म एलिमेंट है. इफ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, पहले सेक्शन में क्या देखा अपन ने, द ब्लॉक कंटेनर. सेकंड सेक्शन में क्या है, फॉर्म कंटेनर, राइट. सो फॉर्म कंटेनर के अंदर क्या है, लॉग फॉर्म, राइट. लॉग फॉर्म क्या कर रहा है, इसको आईडी स्पेसिफाई किया, ठीक है. एंड by doing certain things, I am able to extract the data that are being inputted in these input tags. Okay, इसका formatting बहुत tricky है, एक second. Let me try to form this format document. Yeah, this form. Yeah. So this formatting is better. I don't know why it is not sticking to prettier. Let's see. What I'm doing is blog form. Okay, the blog form. This is nothing but the static thing that you see over here. Then I have like different div elements, and these have like input box. So if I want to style them collectively, right? So मैं उनका styles यहाँ पे define कर पाऊंगा. इसके लिए उनको मैंने save class देके रखा. Although I have not added anything specifically for this. ऐसे ही इसके अंदर क्या है, सबसे पहले टाइटल ले रहा हूँ मैं. तो टाइटल के लिए एक लेबल है which shows over here, and then there is an input tag which is this input tag, and it has ID of title, it has name of title. Okay, so ID ये जो for है ना, this references to this ID. So this is a good way to write like a form. Okay, so if you write a label, right? So if I click over here, I don't think so it will work. Yeah, it is working. See, I am not clicking on this input tab, but if I click on this blog title, still this focuses me on the input tab, because this label is referring or referencing to this input tab, right? Similarly, if I do this for this one, this one, this one, अच्छे से click नहीं हो रहा. Yeah, okay, इसका reference बराबर नहीं किया मैंने.
इसका कहाँ पे सब अभी ठीक कर रहा है राइट. सो दिस इज द थिंग. नाउ लेट्स सी व्हाट वी कैन डू. सो div एलिमेंट्स है, उसके अंदर लेबल है और एसोसिएटेड इनपुट टैग है. देयर इज एन आईडी फॉर दैट. आईडी इज फॉर द for facilitating the label tag, and name is something that I am using in the JavaScript for accessing the value in real time. ठीक है. तो अभी इसके लिए अपन क्या करते हैं. आई थिंक सो CSS भी गो थ्रू करने की जरूरत नहीं है, बहुत बेसिक सी स्टाइलिंग है. मैंने मार्जिन वगैरह उड़ा दिया, मैक्स हाइट सेट कर दिया बिकॉज आई डिड नॉट विश टू हैव ओवरफ्लो. इफ आई से दिस ना, अब ये देखो कोई भी स्क्रॉल बार भी नहीं है, ऑल्दो देयर इज सम sketchy thing going on over here. उसको इग्नोर करते हैं, चलते हैं. देन आई हैव वेरी बेसिक स्टाइलिंग, जैसे कि nav बार को स्काई ब्लू दे दिया, कुछ ऐसा रिसर्च करके नहीं आया हूँ कि कलर पैलेट रखूंगा इस पे, जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस है राइट. देन कंटेनर है जो कि मेन टैग है राइट. मैं मेन टैग को मैं क्या बोल रहा हूँ, सिलेक्ट कर रहा हूँ. दिस इज ID selector and I am giving it a layout display grid, and I am setting 1 FR which is 1 fraction and 0.5 fraction. तो काइंड ऑफ ये जो सेक्शन है उसका डबल ये सेक्शन है. ठीक है. दिस इज व्हाट आई एम मीनिंग बाय दिस स्टेटमेंट. ग्रिड मैंने सेट किया, 2 कॉलम्स चाहिए मेरे को. तो पहला कॉलम है एक फ्रैक्शन और सेकंड है उसके हाफ साइज का. तो एक फ्रैक्शन मतलब इतना रीजन, एंड इसका जो हाफ डिवाइड करोगे सैंडविच जैसा, अगर उसको फोल्ड करोगे तो काइंड ऑफ इतना ये ब्लॉक के विड्थ जितना है राइट. Then I have assigned some padding just for the spacing purpose. Spacing हो गया वैसे बताओ, ignore. कंटेनर, फिर ब्लॉक कंटेनर को स्टाइल किया है कि ग्रिड रहेगा राइट. एज आई एम राइटिंग समथिंग आउट तो ऐसे ऐसे साइड बाय साइड वो लेआउट हो रहा है राइट. तो उनको एक फ्रैक्शन मतलब इक्वल साइज के 3 कॉलम्स चाहिए मेरे को राइट. और उनके बीच में गैप दे रहा हूँ 10 पिक्सल्स का, तो दे वोंट स्टिक टू वन अनदर. ठीक है. सिमिलरली ब्लॉक कार्ड है, दिस इज नथिंग बट द कार्ड्स दैट विल बी रेंडर्ड ओवर हियर राइट. अगर यहाँ पे नहीं बताओ, कंट्रोल Z करूंगा तो बहुत कुछ ज्यादा चेंजेस होने का. ब्लॉक कार्ड वही समझ लो, मतलब जो भी चीजें रेंडर हो रही है. आई विल गिव यू अ ग्लिम्प्स ऑफ दिस. यहाँ पे देखो, वो तो फलता कोड है, तुमको समझे. यहाँ पे देखो ब्लॉक कार्ड मैं ना क्लास में ऐड कर रहा हूँ. तो whichever element in the document has block card as the class name ना, उसको ये सारी स्टाइल्स अटैच हो जाएंगे. तो that is how whenever I create the form block through the form, it is being styled in a similar manner. ठीक है. फिर फॉर्म कंटेनर है, उसको विथ दे दिया. फॉर्म ब्लॉक को कुछ दे दिया, स्टाइल्स दिया, जैसे कि फ्लेक्स दिया. फ्लेक्स का डायरेक्शन कॉलम किया, क्योंकि इसको रो करूंगा ना तो देखो क्या होता है, ऐसा साइड बाय साइड स्टिक करेगा. और इसका नेचुरल बिहेवियर भी ऐसा ही है राइट. इफ आई रिमूव दैट लाइन एंड इफ आई टेक दैट लाइन हियर, it will give us the expected desirable layer. That's why I have like put this design thing. फिर ब्लॉक फॉर्म है, नथिंग स्पेशल. इनपुट बॉक्स को कुछ कर रहा हूँ, विथ दे रहा हूँ, फिर इनपुट को विथ दे रहा हूँ. दैट्स व्हाई इट इज स्पैन राइट. मैं कमेंट दिस आउट, सेव इट. इट वोंट गो ऑल द वे. सो जस्ट मिनिमलिस्टिक स्टाइलिंग, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस. नाउ व्हाट वी विल डू ना, पहले इंडेक्स में जाते हैं और यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे लिंक किया है, स्टाइल वाले फाइल को लिंक किया है यूजिंग द लिंक वाला थिंग, एंड स्क्रिप्ट फाइल को लिंक किया है यूजिंग द स्क्रिप्ट. और यहाँ पे डिफर कीवर्ड डाला है. यू कैन गेट इनटू दिस, मतलब डिफर इज समथिंग दैट हेल्प्स इन एग्जीक्यूटिंग योर स्क्रिप्ट्स व्हेन द डॉक्यूमेंट हैज फुल्ली लोडेड. मतलब सोचो अगर तुमको कोई इंटरैक्शंस है एंड वो डॉक्यूमेंट लोड भी नहीं हुआ, मतलब व्यू पोर्ट पे आया भी नहीं, और लोग वो उसको अगर इंटरैक्ट करते हैं उस पर, तो ये स्क्रिप्ट को तो वो चीज मिलेगा ही नहीं राइट. तो उससे वो काइंड ऑफ एरर आ जाता है. डेफर कीवर्ड मेक श्योर कि once the document has entirely loaded, then only the scripts are executed, right? So this is the use case. Now if I control click on this, तो ये script वाले फाइल में आ जाएगा. This is the code we are going to write, and reference के लिए already अपने पास है. We won't mess up.
एंड स्टाइल के लिए अपने पास जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया वो। फाइन, नाउ वी विल क्रिएट अनदर क्या बोलेंगे इसको, हैंड्स ऑन JS, ठीक है। तो इसके अंदर मेरे को एक स्क्रिप्ट फाइल बनाना पड़ेगा। Let's see if there is an error in the console, whether it is unable to link to that script file. Did I save it? अच्छा मैंने क्रिएट कर दिया है, so चलेगा मेरा। So let's start by adding document dot add listener. तो ये समझने से पहले let's come back. Now since we are over here, see this is the console. If I say document, what do you think is going to print? See, the entire document that I have is being printed, right? Because the things are being passed somewhere. Over here, see, everything is being passed by the browser, right? So console has like access to everything, the HTML code, your script code, everything, right? So if I do console window, it is going to give me a huge list, right, of everything that I can do with this object, right? Some things are out of even my extent. Even बहुत अच्छे भी experts होंगे ना, even they won't know about इतने number of things, right? So when the code, the bundle of HTML, CSS, and JavaScript reaches the browser, it parses everything and creates a object. Like, see, this is the key, this is the functional value, this is a key, this is a value. वो की वैल्यू पेयर के हिसाब से उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है, एंड दैट इज नोन एज विंडो, ठीक है। लाइक वी सेड कि ये सब चीजों का वो बनता है, राइट, एक ट्री बनता है। बॉडी के अंदर दो चीजें तो इसका ट्री बन, उसके अंदर फिगर है तो उसका ट्री बन रहा है। ऐसे ही ये डॉक्यूमेंट में इफ आई ट्राई टू सर्च ना, क्या सर्च करूं, ब्लॉक कंटेनर, it will be able to find, I think not. बहुत डिफरेंट थिंग्स है, इसको ब्राउज करने में मतलब बहुत टाइम चलता है, राइट। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, जब ये ट्री जो है, ये जो ट्री है, तो इसके अंदर जैसे नेस्टिंग है ना, तो एक की होगा बॉडी नाम का, उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स होंगे, और वो भी एक ऑब्जेक्ट होगा काइंड ऑफ, वो उसके अंदर की होगा हेडर, उस वो रेफर कर रहा होगा फिगर को, और H1 टैग मीन कर रहा होगा दो सेक्शन टैग। ऐसे डिक्शनरीज के पेयर्स बनेंगे और ऐसा नेस्टिंग क्रिएट होगा, एंड वेरेवर देयर इज नेस्टिंग we can visualize that in a tree form. That is why it is shown. This is known as a documentary, right? So this is the thing. And when we write the JavaScript code ना, तो what I am doing, मैंने document को एक event listener add किया है। Now what does an event listener do? Event listener is nothing but something which listens for different type of events. What is the type of event over here? The type of event over here is this. If the document content has loaded, then we are going to execute this callback function. We have already learned about callback function, right? We are taking things into application. जो हमने सीखा है इसको application में ले रहे हैं। तो document dot add event listener, किसी का माइक शट हो गया? Any query as of now? नहीं ना, ठीक है। सो डॉक्यूमेंट पे मैंने एक लिसनर ऐड कर दिया कि, और उसको मैं बोल रहा हूँ जब डॉक्यूमेंट पूरा लोड हो जाता है, देन ओनली डू द सर्टेन थिंग्स। नाउ व्हाट आर द थिंग्स दैट वी वांट टू डू विद दिस थिंग, राइट? सो व्हाट आई वांट इज, आई वांट टू ऐड अ इवेंट लिसनर टू दिस फॉर्म इटसेल्फ, कि जब भी चेंजेस हो तो वो कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा हो। तो स्टोर करने के लिए क्या करूंगा, मैं एक ग्लोबल वेरिएबल बना, लेट ब्लॉग्स, ये समझ लो लिस्ट है जिसके अंदर सारे ब्लॉग्स अपन है ना अपेंड करते जाए, ठीक है, काइंड ऑफ दैट इज द आइडिया।
वी माइट यूज इट, वी माइट नॉट, ठीक है। तो एक चीज बना दिया। नाउ एक और चीज बनाते हैं, लेट करेंट ब्लॉक, मतलब जो अभी ब्लॉक है वो क्या है, और इसको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में करना। व्हाई? बिकॉज आई वांट टू टेक द टाइटल, आई वांट टू टेक द सब टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड द ऑथर्स नेम, राइट। सो उसके कीज बनाऊंगा और उसमें वैल्यूज असाइन करूंगा, और उस हिसाब से मैं एक्सेस करके उसको डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करूँ, ठीक है। एंड हाउ आई विल डू दैट इज const blog form document dot get element by id blog form. Now if I do this, wait a second, split screen पे जाते हैं अपन, we don't require the sidebar, we go to this thing। हमको क्या मालूम है, हमको ब्लॉग पे क्या करना है, ब्लॉग फॉर्म पे करना, ब्लॉग फॉर्म पे काम करना है, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक आईडी असाइन किया हुआ है, प्रायरली मैंने इसको एक आईडी असाइन किया हुआ है। आई एम ट्राइंग टू एक्सेस दैट थिंग डॉक्यूमेंट के अंदर, गेट एलिमेंट बाय आईडी, मतलब एक एलिमेंट मेरे को रिटर्न करो जिसकी आईडी ये है। सो इट इज गोइंग टू फेच मी दिस फॉर्म एंटायर, ठीक है। नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू ऐड अ डिफरेंट टाइप ऑफ इवेंट लिसनर ऑन दिस ब्लॉग फॉर्म, ऐड इवेंट लिसनर विच इज चेंज। मतलब ये जो फॉर्म के अंदर कुछ भी चेंज होता है ना, तो मैं चाहता हूँ कि ये एक कॉल बैक फंक्शन को वो करे, फायर करे, जिसका नाम मैं ऑन चेंज रख देता हूँ, और उसको मैं बाहर यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। const on change is going to be an arrow function। एरो फंक्शन का भी सिंटैक्स देख लो गाइस, एरो फंक्शन नहीं रखते, नॉर्मल फंक्शन रखते हैं, सिंस वी हैव नॉट स्टडीड एरो फंक्शन, कंफ्यूजन हो जाएगा। सो सिंपल सा फंक्शन है, ऑन चेंज इसका नाम है। इसके अंदर एक चीज हमको एक्सेसिबल है, दैट इज इवेंट। सो what I'm saying is, whenever change happens, whenever someone interacts with this form, this event listener will take note of that, ठीक है, change event। Then there is a callback function। So जब वो note किया, तो it will run this callback function to do certain tasks for us। So what tasks do I want to do? Okay, so whenever this happens, so I have access to all the things। So what I want to do is current log, and we know about objects, right। उसको अगर values देना होता है, तो how we can do that is we create a dot notation। डॉट नोटेशन यूजुअली वर्क नहीं करेगा यहाँ पे, इवेंट ऐसा करके, इसके लिए हमको पैरेंथेसिस, ये सॉरी स्क्वायर ब्रेसेस यूज करना। इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम। नाउ डोंट वरी कि क्या हो रहा है, मैं एक बार लिख लेता हूँ फिर बताता हूँ, ठीक है। नाउ व्हाट आई डिड इज देयर इज अ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड ओवर हियर। आई नो कि दिस इज गोइंग टू स्टोर अ की वैल्यू पेयर, राइट। तो what I want to set as a key is being processed by this piece of code। तो current block के अंदर I want to create a key of event dot target dot name। so event dot target मतलब जहां से ये इवेंट अकर हुआ है, वहां से जो नेम रिटर्न हो रहा है, मतलब नेम कहाँ पे है भाई, सी नेम क्या है इसका, सी दिस इज द नेम, राइट। So if I make changes to title, so it is going to add a key of title, and it is going to reflect all the values that I assign over here as the value of this key inside of this, okay। So we can do console log current, yeah, just to see। So if I do something, and if I see मैं चेंज किया, तो देखो करंट ब्लॉक में वो ट्रैक हो रहा है, राइट। समझ रहे गाइस, होपफुली। ऐसे ही सिमिलरली whatever changes I make, correct, sub title, then I move to log body, then I move to Jamal। So by the time I am clicking on this button, it has all the things tracked, जो भी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी वो रीड कर पा रहा हूँ, and that is happening due to this line of code। Now you can have different types of implementation to do this action। I found this one the easiest, right, क्योंकि इसको और भी कॉम्प्लिकेटेड वेज के थ्रू भी आप कर सकते हैं।
but it depends on you now how cleaner, how what amount of clean code you run. So that is what I am data. Now what I want to do is whenever I click on the submit button, I want to add a blog post for that, right? That is what something I want to do. It won't take much time now. So what I want to do is I want to grab the button that is going to take care of that action, right? So form button. I think so मैं भी tired हो रहा हूँ धीरे धीरे, but yeah, I will move on. चलिए। तो यहाँ पे बटन देखो, बटन का क्या है, सबमिट बटन मैंने की दिया है, राइट? सो आई विल यूज दैट इटसेल्फ, स्विच करने की जरूरत नहीं थी over here, right? Now I will have access to this button as well. So I can add another event listener to this form button, and that is going to be a different event listener, which is going to be clicked. So I want to see whether someone clicks on this button, and if they do, I want to submit this form. So I create a function for that over here. Function on submit. I will take event because every event listener gives us an event, right? So we take an event, and what we are going to do is console log current log. Now, क्या रहना चाहिए? Whenever we click on this after writing some input, it should be console logged, right? That is the behavior we are expecting. But it won't happen क्योंकि एक चीज है जो हमने अभी take care नहीं की. So let's see what that is. Jamil's subtitle क्या है ये? Body Jamil. So if I click on this, by default it will refresh. Okay, ये देखो कुछ अलग ही behavior दे रहा है. Refresh होके सारा data मेरे URL में डाल दे. Because that is the default behavior of a form. See, because I have used the form tag over here, and I have specified a button of type submit. So whenever this button is being clicked, okay, so it is submitting this form, and the default behavior of a form is कि वो सारा data लेके URL में डाल दे. So we do not want that behavior because we are हमारा अलग ही way है roll करने का, right? So what we do is we add a piece of code event prevent default, like it says जो default behavior है उसको print कर, तो मतलब prevent कर. So if I do something random, I push the thing, see, अब refresh नहीं, right? So that is why we needed this code. Now what I want to do is for every code I want to create a new element, right? That should be displayed over it. So dynamically मेरे को create करना पड़ेगा. How does that work? So I am going to do some stuff, and let me just take some inspiration. थोड़ा सा time हो गया देख के code भूल गया. I will go to on submit function, console log यहाँ पे भी है, इसको remove करेंगे. Logs to render. Timing to submit. Fine. So what I am going to do is अभी जैसे ही मेरे पास form data present है, so I can start creating an element in the document, right? So वो कैसे कर सकता हूँ? I will create a different function for that, और मैं वो function इस function के अंदर से call कर दूँ. Create card, ठीक है? कुछ भी नहीं दे सकता. चलेगा. Now what I will do is, since I have access to this current block, global scope में, that is why I have access, right? Lexical scope में conflict नहीं होगा. This will also have the shared memory of global scope. That is why I will be able to access this thing. Now what I want to do is const new card document dot create element of type article. Okay, so this is a way where we can create a article tag. तो आर्टिकल यहाँ पे कहीं पे यूज नहीं हो रहा है तो तुमको नहीं समझेगा. आर्टिकल ये होता है, काइंड ऑफ एक टैग है बस, स्पेशल. नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज न्यू कार्ड में
I want to add class list के अंदर block card, right? Because I want the styles that are written for block card applied to this thing, right? Now what I want to do is inside of this new card, inner HTML, इसके अंदर का जो HTML है that I want to be dynamically typed. तो ये लिखने में टाइम जाएगा तो मैं वो कॉपी कर ले, right? Just because we want to wind up faster. As you can see, this is something similar. यहाँ पे नेमिंग कन्वेंशंस मैंने बेटर रखा है. यहाँ पे मैं बस हैंड्स ऑन कर रहा हूँ तो थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ. सुन, ये चीज है मेरे को यहाँ पे भी बस वो करना. Sorry. Save कर. Now I can move back to HTML. You can see the HTML. Won't take any effect. I can do some tabs over here just for formatting purpose. So as you can see, मैंने क्या किया, एक नया आर्टिकल बनाया, उसको ब्लॉग कार्ड वाला वो दे दिया, क्लास दे दिया. अभी इसके अंदर जो HTML है, अभी तो न्यू बनाया, राइट? तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है एक्चुअली. तो उसके अंदर मैं डालना चाहता हूँ कुछ HTML. एंड व्हाट इज दैट? हेडर है विच इज गोइंग टू टेक दिस करंट ब्लॉक का टाइटल, करंट ब्लॉक का सब टाइटल. तो इसको आई थिंक सो ऐसे करना पड़ेगा, स्ट्रिंग में करना पड़ेगा, ठीक है? अब दिस वोंट थ्रो एन एरर, ठीक है? करंट ब्लॉक का डिस्क्रिप्शन एंड करंट ब्लॉक का ऑथर, दैट इज ऑल आई वांट टू डू. This is it. Now when this new card is ready, I want to add that. Where do I want to add that? That I have to select log contain. So document or query selector भी use कर सकते हो. Query selector is something different जहाँ पे तुमको ये specify करना पड़ता है. So block container over here है ना, तो जैसे CSS में specify करते हो, right? ID selector के लिए वैसे यहाँ पे भी कर सकते हो. This will work the same. Now मेरे पास ब्लॉक कंटेनर है तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, सिंस आई हैव द न्यू थिंग रेडी, आई कैन डू डॉट अपेंड चाइल्ड, इट इज गोइंग टू बी द न्यू. मैंने एक एलिमेंट क्रिएट किया विच इज एन आर्टिकल एलिमेंट, उसके अंदर कुछ HTML लिखा जो डायनेमिकली टाइप है, राइट? इट इज टेकिंग वैल्यूज फ्रॉम आर जावास्क्रिप्ट विच इज टेकिंग वैल्यूज फ्रॉम द इवेंट्स, राइट? और उस वे में उसको एक डायनेमिकली कार्ड बनाया और वो कार्ड को मैं बार बार अपेंड करता जा रहा हूँ ब्लॉक कंटेनर के अंदर. दैट इज द एंटायर प्रोसेस दैट आई एम डूइंग. व्हाट आई वांट टू डू इज आफ्टर आई एम डन, आई वांट टू अपडेट करंट ब्लॉक टू दिस, राइट? सो दैट की फ्रेश वैल्यूज आए. नेक्स्ट वन, and I will just show an alert message that we can do using this alert function and give it the block was submit. And if we have not made any mistakes as far as now, we will see the similar behavior. Either I can press on this button or I can enter. So I think so it is not registering. Wait a second. That is because I have not used this function. यहाँ पे वो function run करना पड़ेगा, because on submit तभी fire हो रहा है whenever I am clicking on this button. And वो जब button click हो रहा है, then only I want to create a new element and append it dynamically to the document. Now let's save this. Let's try to give it values again. Block. Title. मैं थोड़ा स्लो होते जा रहा हूँ धीरे धीरे ना. See, we have the similar behavior. That was it for the demonstration purpose. Hopefully you got the idea कि कैसे dynamically type कर सकते हैं, how the events work, how we can write things into the document live, right? I can add as many blocks. I can also add an icon for delete. If I delete on that button, I want to remove that element. So such actions that I can do using JavaScript. That is why it is very important to learn when you are getting into like development. So let's conclude. Hopefully this was fun for you to learn.
किसी को नींद आ रही होगी तो इट इज ओनली नेचुरल। मैं भी बहुत सेशंस बैठा हूँ भाई सीखने के हिसाब से, एंड as a person, as a student, it is very hard to stay attentive. So hopefully this was fun for some. And still, if you lost track somewhere in between, hopefully the recording is up and going.